यस आए हुए सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रीमियर टेक्नोमीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये तीसरे दिन में ये पहला मुकाबला अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करेंगे, यस हमारे अंपायर रेडी है, अंपायर्स हमसे विदा लेके अब मैदान की ओर बढ़ेंगे। अब टाइम हो चुका है 7:27, 7:30 को पहला बॉल गिरना होना ही चाहिए, ये ध्यान रखें। दोनों टीम प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी भी यहाँ पे रेडी रखनी है, ये ध्यान रखें। यस तो मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें तैयार हो चुकी है, हम रेडी है, कैमरामैन रेडी है, अंपायर्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी भी मैच रुका हुआ। थोड़ी देर के लिए हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि हमारे सारे स्पॉन्सर्स को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स जस्ट अस एंड ऑटो, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हर साल इस टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सर का काम वो हमेशा ही करते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर्स सारे हमारे जो लगातार हम पे विश्वास दर्ज कर रहे हैं, और पूरी टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं। इस बार जैसे मैंने कल भी कहा कि पहले 2 सीजन हमने आइडियल पे खेला है, लेकिन उसके बाद ये तीसरा सीजन MS धोनी क्रिकेट एकेडमी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन लश ग्राउंड, और ये ग्रीन लश ग्राउंड में पिछले 2 दिन से हम लगातार मैचेस देख रहे हैं। आज ये तीसरे दिन का पहला मुकाबला अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको रेडी होना है प्लीज़। अब तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए, 8 मैचेस खेले गए, 360 प्लेयर अब तक इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं, 811 रन अब तक इस टूर्नामेंट में बने हैं, 71 विकेट्स, 549 बॉल, 40 चौके, 50 छक्के, 7 25 देखें, 50 अभी तक कोई नहीं बना है, 14 विकेट्स जो डक के रूप में आउट हुए हैं, 1 मेडन ओवर, 4 विकेट लेने वाले 1 गेंदबाज, 43 वाइड्स, 55 कैचेस, 7 रन आउट्स, 11 नो बॉल, और सबसे ज़्यादा स्कोर अगर इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो 84 है, लोवेस्ट स्कोर 33 है, और हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल 43 है। तीन काफ़ी अच्छे जो बॉलिंग फिगर्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के दिन इस बड़े मुकाबले में
दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुपर सैटरडे आप सभी को मुबारक हो। और इस सुपर सैटरडे में पहला मुकाबला अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। हमारे दर्शक धीरे धीरे कदमों से अब फिर से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते हैं आज तीसरे दिन के पहले मुकाबले में, जहाँ पे विक्टोरिया ट्रैवल्स हैडिको सीसी के बीच होने वाला ये मुकाबला। दोनों टीमें तैयार हो चुकी है और हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। आज ये तीसरे दिन में पहले मुकाबले के लिए प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये भव्य दिव्य आयोजन। यस अंपायर, थोड़ी देर के बाद हम मैच स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे स्कोरर्स यहाँ पे रेडी होंगे आपको हम यहाँ से बताएंगे और उसके बाद हम मैच को स्टार्ट करेंगे। इस पूरी टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, एसीएल दोहा कतार यूट्यूब चैनल एंड श्री लाइव वीडियोस पे इस पूरे टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आप लाइव एक्शन देख सकते हैं। जैसल भाई, रमजी भाई, रियाज भाई और पूरी एंटायर टीम जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में जो मेहनत लेती है वो हमेशा ही रंग लाती है। और आज भी अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट एक अलग मुकाम पे है, अलग जगह पे खड़ा है। अंपायर अभी भी स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा आपको हम कहेंगे उसके बाद ही स्टार्ट करो प्लीज। थोड़ा 1 मिनट सर, स्कोरिंग का थोड़ा अपडेशन बाकी है। यस अंपायर रेडी, हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन का ये पहला मुकाबला। और पहले मुकाबले में हम तैयार हो चुके हैं, जहां पे नंबर उसको नेक्स्ट नंबर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के संकेत इट्स वाइट। आज इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, गेंद को आने दिया और हल्के हाथों से उसे खेला जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 2 रन।
मैदान की ओर बढ़ेंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, सिंगल सिंगल रनों से अब रन आगे बढ़ते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 3 रन, 3 ऑन बोर्ड। आप देख रहे प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग का यह भव्य दिव्य आयोजन। इस बार हल्के हाथों से खेला, हालांकि पावर प्ले ऑन है, फिर भी थोड़ा सा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। और इस बार इस गेंद को खेला हैडिको सीसी वर्सेस दूसरी जगह विक्टोरिया ट्रैवल्स के बीच मुकाबला। हैडिको सीसी जो बल्लेबाजी कर रही है, जिशान और अशरफ, ये दो बल्लेबाज बीच मैदान पे, और पहला ओवर जिनके हाथों में है सिराज गेंदबाजी करते हुए। इस बार एक खराब शॉट सिलेक्शन और बहुत ही अच्छी कीपिंग वहां पे। रियाज भाई कीपर की भूमिका में, हमेशा ही रियाज भाई ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 पे। इस बार गेंद को खेला सीधा हाथ में, ये गेंद की होम डिलीवरी है फील्डर के हाथ में, और ये विकेट, पहला विकेट आता हुआ हैडिको सीसी को लगता हुआ ये पहला झटका। ऑप्शन के बाहर और विकेट, बैक टू बैक, ये दूसरा विकेट। तू चल मैं आया, ऐसा वाला ही विकेट। उस्मान आए और उस्मान चले गए। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी और सीधा हाथ में खेल बैठे। विकेट क्षेत्र सेम था, और ये मुझे लगा हम रिप्ले देख रहे, रिटर्न एक के बाद एक 2 विकेट्स अब तक आते हुए। आप देख सकते हो ये सिक्सर सुप्रीमो के बॉल्स है, और उसका खास जो बैग है, आप आपके ऑन स्क्रीन देख सकते हो कि जिस प्रकार से ये बैग सिक्सर सुप्रीमोस के बॉल यूज किए जा रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, केतन भाई सेट एंड ऑल। और ये हमारा सिक्सर का बैग आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट एक अलग मुकाम पे है, कि यहाँ पे कोई भी जहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। ये बॉल थोड़ा सा वहाँ पे दिया जा रहा है हमारे बॉल बॉय विजिश भाई को मैंने आते ही पूछा, क्योंकि पिछले साल उनका पॉनी टेल था, वो पॉनी टेल इस साल गायब दिख रहा है। तो मैंने आते ही पूछा भाई ये क्यों हुआ, बोलते हैं रमजी सर की कृपा। तो ये होता है, रमजी सर हमेशा डिसिप्लिन में बहुत बिलीव रखते हैं हमेशा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 4 पे 2, हैडिको सीसी को लगता है और एक झटका। लेकिन रियाज भाई देखिए कितने खुश है, कीपर है, और रियाज भाई हमेशा ही उनका हमने वो डांस देखा है, उनका सब कुछ देखा है पिछले साल। एक क्रिकेट के प्रति हम हमेशा कहते हैं, क्रिकेट के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, क्रिकेट आपको जीना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट जियोगे ना तो फिर आपकी उम्र है तो नंबर है, ये ध्यान में रखो।
और यही हमें हमारे रियाज भाई हमेशा कहते हैं कि भाई मेरी उम्र कितनी है ये मत पूछो, मैं कैसा खेलता हूँ ये मुझे ज़रूर बताना। और ऐसा ही हमेशा वो करते हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 4 पे 2, 2 लगातार विकेट। क्या गेंदबाजी की है गेंदबाज ने। पहले ओवर समाप्त हुआ, अच्छी गेंदबाजी अशरफ, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की। सीधा जड़ में, व्हाट अ बॉलिंग, ये टीम हैट्रिक, इट्स टीम हैट्रिक विकेट। लगातार 3 गेंदों में 3। पहले 2 अलग गेंदबाज ने लिए थे, लेकिन ये देखिए ये तो बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं था। वो तो चारों खा निश्चित, वो तो देख रहे थे कि भाई गेंद गई कहां, सीधा बिल्लियां उखड़ते हुए, गिल्लियां उखड़ दी। और यहाँ पे अब ये स्थिति है 4 पे 3। जितने रन बने उतने विकेट भी गए, अब सिर्फ 3 गए, 1 विकेट का वो अलग फासला। लेकिन हैडिको सीसी, आपको यहां से परिस्थितियों को बदलना होगा, अपने आप को कहना होगा कि ऑल इज वेल। नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, खुर्शीद, खुर्शीद के बारे में भी हम हमेशा बात करते हैं। इस बार गेंद को आने दिया, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गेंद को खेला, बहुत अच्छी शुरुआत हम कहे। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 4 पे 3। इस बार ये कुछ अलग करने की कोशिश, ये झाड़ू वाला स्ट्रोक है। इस गेंद को जिस प्रकार से लपेटा, 1 रन। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर है ये दूसरा। प्रेशर हैडिको सीसी पे लगातार, और अब इस हैडिको सीसी को इस प्रेशर से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और एक अच्छी साझेदारी बुननी होगी। अगर साझेदारी बनेगी तो फिर मजा आएगा, क्योंकि अब नए बल्लेबाज है वलीउल्लाह। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। और रियाज भाई का एनर्जी लेवल तो कभी कम ही नहीं होता। रियाज भाई को आप पूरे दिन खिलाओगे तो भी वो पूरे दिन खेलते रहेंगे। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 5 पे 3, ओवर नंबर दूसरा, और लाजवाब गेंदबाजी अब तक। इस बार गेंद को आने दिया, जगह बनाई, और जगह बहुत थी, लेकिन फील्डर है फाइन लेग से, और वो जब तक आए वो फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 6 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर दूसरा, जिस प्रकार से सिराज ने किया, फिर फवादुल्लाह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे, 5 गेंदे किए, 2 रन अब तक खर्च किए, 1 विकेट। ये इकोनॉमिकल गेंदबाजी अब तक होती हुई, मजा आता है ऐसी गेंदबाजी देख के। अच्छी गेंद फिर से जड़ में, लगातार जड़ में गेंदबाजी। और अभी भी जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मजा आता है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कंजूस वाली गेंदबाजी आनी चाहिए। हम जब टेनिस क्रिकेट की बात करते हैं 6 ओवर के मुकाबले में, तो फौजुल्लाह की बात की जाए तो ये डॉट बॉल था। ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर की समाप्ति, 6 रन 3 विकेट। क्या गेंदबाजी हुई है। मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि इस पूरी टूर्नामेंट में रन नहीं बन रहे, लेकिन एक आध मैच ऐसा आता है जहां में 80 से ज्यादा रन बनते हैं, क्योंकि 83 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है और 33 ये सबसे लोएस्ट स्कोर है। ये सब कुछ होता है। स्कोर अब तक का 6 रन हैडिको सीसी, 3 विकेट के नुकसान। ओवर नंबर तीसरा अब किसके हाथ में होगा ये देखना होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लिदिन, लिदिन के बारे में हम हमेशा करते हैं, ली के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। और उनका जर्सी नंबर देखिए 10। इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, और ये फिर से विकेट। विकेट नंबर 4। विकेट आ रहे, विकेट आएंगे तो फिर मजा आएगा। विकेट जिस प्रकार से गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी की है, तो पूरी तरह से हैडिको सीसी के बल्लेबाजों को मौका ही नहीं मिल रहा है। बल्लेबाज आ रहे, बल्लेबाज जा रहे। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 6 रन, विकेट खोए 4। ओवर नंबर ये हम बात करें तो ओवर नंबर तीसरा। सारे गेंदबाजों ने तारीफ करूंगा जिस प्रकार से जो प्रेशर है उसे लगातार कायम रखा है, और यही होता है। चिराग आया ना, अभी चिराग को करो कनेक्ट। चिराग @123 ना, कैसा स्मॉल मरीज है सर? सी सी कैपिटल चिराग @123 @123 यस करो। हाँ खड़ा जब कहाँ है? सी कैपिटल है। और ये फिर से विकेट। ये देखिए रियाज भाई तो नाच रहे भाई, नाचना भी जरूरी है। इनका नाचना इनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये नाचते हैं तो इनकी टीम झूम उठती है, और इसी प्रकार से ये प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यही वो एनर्जी लेवल हाई करने का काम हमेशा किया जाता है रियाज भाई की तरफ से, और आज भी वो करते हुए। हैडिको सीसी 4 विकेट, बैक टू बैक विकेट, विकेट और विकेट। सिर्फ विकेट की भाषा बोली जा रही है। हैडिको सीसी को यहां से थोड़ा सा अपने आप को कहना होगा कि भाई हम यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट में हैं और हमें अच्छा खेलना है। हम अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर नए थे, और जिस प्रकार से उनके चेहरे पे वो बॉल लगा, उनके पास सिद्धू गए, सिद्धू ने पूछा कि आप बाहर जा सकते हो, वो वहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं मैं खेलेगा। आज हैडिको सीसी को यही कहना होगा, हम खेलेंगे, हम रन बनाएंगे, हमारे टीम को एक अच्छे टोटल तक लेके जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा अपने आप को। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 6 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं प्रीमियर टेक्नोमीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का डे 3 में
5 विकेट। और अब ये ऑन हैट्रिक गेंदबाज। ये फुल टॉस गेंद हवा में है, फील्डर दूर रह गए, 4 रन, चौका। यही तो मैं बात कर रहा था कि अब कमेंटेटर को भी थोड़ा चार्ज करना है बल्लेबाजों को, क्योंकि थोड़ा सा ये मुकाबला एक तरफा जा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये देखिए जिस प्रकार से ये फुल टॉस गेंद थी, अगर खिलाड़ी थोड़ा सा यहाँ पे होता तो मजा आता। लेकिन ये 10 रन अब स्कोर कार्ड पे, 10 ऑन बोर्ड। और विकेट की बात की जाए तो विकेट खोए अब तक 5। मजा आता है ऐसे मुकाबले देख के। फिर से अगली गेंद, और इस बार सम्मान दिया। मैं हमेशा कमेंट्री करते हुए हमेशा कहता हूं सर कि अच्छी गेंदों का सम्मान करो और बुरी गेंदों का अपमान। ये अच्छी वाली थी, और जिस प्रकार से यहाँ पे सम्मान दिया, ये कहते हुए उनको कि भाई मैं सम्मान देने आया हूँ। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हर गेंद पे छक्का चौका, इसका मतलब क्रिकेट नहीं है, सिंगल डबल्स ये भी बहुत मायने रखता है। इस बार ये छोटी गेंद थी, फिर वही उसी दिशा में फील्डर है, और इस बार वॉट फील्डिंग, क्या फील्डिंग है। जिस प्रकार से ये गेंद को फील्ड किया, मजा आ गया। क्योंकि जहां पे 4 रन थे वहां पे आपने सिर्फ एक ही रन खर्च किया। बहुत ही बहुत अच्छा कमबैक कहूंगा, क्योंकि एक चौका लगने के बाद अब थोड़ी परिस्थितियां बदल चुकी है। 12 पे 5 ये स्थितियां है। ली, इस बार गेंद को आने दिया, बैकफुट पे गए, पंच किया, सिंगल मिलेगा कवर से जब तक खिलाड़ी आए। थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक पे ही संतुष्ट। स्कोर अब तक का 13 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अंपायर ने कहा यस ये 2 मिनट का थोड़ा सा वक्त होगा। हैरी को, सीसी को यहाँ से प्लानिंग बनानी होगी कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। और वही टाइम आउट थोड़ा सा हम कहेंगे हमारे सारे स्पॉन्सर्स को, स्पॉन्सर्स के सारे बैनर्स आप ऑनलाइन देख रहे हो, इन सारे को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन हमारे टाइटल स्पॉन्सर जस्ट अस एंड ऑटो, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट की खासियत मैंने पहले ही कहा, इस टूर्नामेंट में इस साल एक सरप्राइज लेके आए। क्योंकि जब तक ऑक्शन हुआ था, पहला दिन स्टार्ट हुआ था, किसी को पता नहीं थे वो क्या सरप्राइजेस है। लेकिन जैसल भाई, रमजी भाई, रियाज भाई और पूरी टीम ने कहा कि हम सरप्राइज देना जानते हैं। और ये देखिए वही दिखा रहे, ये बाइक्स ये किसके नाम होने वाली है। क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, ये रियाज हमारे वहां पे ही है, वही वहां से थोड़ा कुछ खा रहे लेकिन मजा ले रहे मुकाबले का। और ये मैन जैसल भाई भी आपको दिख रहे वहां पे। ये दोनों जैसल भाई और उनके साथ रियाज भाई। ये देखिए आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो हमारे रियाज भाई, ये हमेशा ही बड़े स्माइल करते हैं। जैसल भाई हमें हमेशा थोड़े से बिजी रहते हैं, क्योंकि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये बाइक के सामने, मुझे लगता है यही बाइक पे बैठ के जाएंगे रियाज भाई। और मुझे पिछले साल का वो वीडियो याद है सर, रमजी भाई, जब ट्रॉफी अंदर लाई गई थी स्पोर्ट्स बाइक से, और जैसल भाई वहाँ पे वो लीड कर रहे थे। इस साल भी कुछ ऐसा होगा, इस साल कुछ अलग होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्रीजी भाई सॉरी, वो सामने जो जो आता है उनके नाम लेने जरूरी है। यस, हमारे सारे कमेटी मेंबर्स आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप है तो हम है। क्योंकि हमारी हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा ध्यान आप हमेशा ही रखते हैं। क्योंकि हमें जब इंडिया में न्योता मिलता है कि आपको आना है, तो हम बहुत हैप्पी और प्राउड फील करते हैं। क्योंकि इंडिया से यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे आके काम करना, एक अलग माहौल यहाँ पे बन जाता है। क्रिकेट वाला माहौल है। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये गेंद, व्हाट अ बॉलिंग, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग बाय के संकेत। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे हैं 13 रन। और फवाद की बात की जाए तो फवादुल्लाह बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने पहले ओवर में की थी।
ये विकेट पे ऊपर विकेट, मुझे लग रहा है ये विकेट का सिलसिला ऐसा ही शुरू रहा। 6 विकेट अब जा चुके हैं, 14 पे 6। और मुझे लगता है इस पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए तो बेस्ट फिगर में अब फहदुल्ला के भी नाम दर्ज हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी। स्कोर कार्ड की बात की जाए 14 लॉस ऑफ 6। अब यहाँ पे नए बल्लेबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो किस प्रकार से गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। बैटर, नए बैटर को अब बुलाया गया आसिम। आसिम को अपने टीम के लिए बहुत अच्छा काम करना होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे जिस प्रकार से ये मैच चल रहा है, मजा आने वाला है। ओवर नंबर 4 और 6 विकेट। फोर्टीन पे 6। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा 15 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 4, लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पे देखने को मिल रही है और मजा आता है ऐसा देख के, क्योंकि जिस प्रकार से ये मुकाबले आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का टाइम बचाने का काम भी कभी कभी गेंदबाज करते हैं, क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो फिर थोड़ा सा जो लो स्कोरिंग मैचेस है वो थोड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन हेडी को सीसी यहां से कहना होगा कि हम कमबैक कर सकते हैं, हम करेंगे। व्हाट अ बॉलिंग, सीधा जड़ में। अगर मुझे लगता है एलबीडब्ल्यू होता तो जरूर ये प्लम बॉल है, नो डाउट। बल्लेबाज बाल बाल बचे, ऐसा मैं कहूंगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड 15 पे 6 है और अब यहां से थोड़ा सा बल्लेबाज प्रेशर में, उसे थोड़ा प्रेशर को रिलीज करना होगा। एक 10-12 गेंदें खेलनी होगी। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। रियाज भाई तो कभी चूकते ही नहीं, अपील करने से वो कभी रुकेंगे ही नहीं। और ओवर यहाँ पे चौथा अभी भी समाप्त नहीं हुआ, आखिरी गेंद आनी बाकी है। रियाज भाई एनर्जी उनकी हमेशा, मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि भाई आप एनर्जी लाते कहाँ से। वो हमेशा कहते हैं कि ये क्रिकेट के प्रति की ये भावना है, क्रिकेट के प्रति वो प्रेम है। इसी कारण उम्र कितनी है ये मत पूछो, लेकिन क्रिकेट के प्रति लगाव कितना है ये जरूर पूछो। लास्ट बॉल, खराब शॉट सिलेक्शन। और आसिम वहां पे तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं वहां पे करूंगा। और स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 16 रन, 16 लॉस ऑफ 6, 15 लॉस ऑफ 6, ये कोई रन नहीं आया। 15 पे 6, 15 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब ओवर नंबर 5, और ओवर नंबर 5 देखना किस प्रकार से गेंदबाजी में परिवर्तन। मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है और फिर से 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, वो वहां से आएंगे, गेंद को पकड़ेंगे और जिस प्रकार से थ्रो किया है यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन बचे। 2 रन यहाँ पे पूरे करेंगे। स्कोर मूव ऑन 17, लॉस ऑफ 6, 17 पे 6। और लगातार यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि ये पूरी टूर्नामेंट में एक अलग माहौल बनाने का काम गेंदबाजों ने किया है और आज भी वैसे ही करते हुए ये ओवर नंबर चलता हुआ
5 हैरी को सीसी। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर काफी दूर है, जब तक गेंद को जब तक उठाए और तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। स्कोर कार्ड की बात की जाए उन्नीस पे 6। ये फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद को सिर्फ दिशा दी, फील्डर वहां पे मौजूद है, बीट विकेट से गेंद को उठाए, थ्रो करे और 1 रन, लेकिन वहां पे खराब फील्डिंग, रियाज भाई ने गलती की और उसका फायदा 2 रन में हुआ है कि नहीं। ये उच्च न्यायपालिका के पास आएगा थर्ड अंपायर, और हमारे कुणाल पागदरे अब थर्ड अंपायर के लिए तैयार हो चुके हैं, वो बताएंगे कि ये आउट है या नहीं। उच्च न्यायपालिका यहाँ पे अपना निर्णय जरूर बताएगी और थर्ड अंपायर में हम देखने वाले हैं किस प्रकार से ये गेंद आई है। और थ्रो देखिए, थ्रो बहुत ही अच्छा था, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया, पहले तो कीपर के पास बॉल गया और उसके बाद गेंद आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड OUT आउट। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, ये आपके सामने ये सारे दिखाए जाएंगे किस प्रकार से ये आउट था, ये आपको रिप्ले में हम दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन। ये देखिए ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, ये काफी थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, जिस प्रकार से गेंदबाज ने गेंद ली ना वो तारीफ के काबिल है, उसने ऊपर ही देखा, ऊपर से एक एक्शन में और विकेट। अच्छा यहाँ पे ये विकेट नंबर आता हुआ 7वां विकेट आता हुआ। और रनों की बात की जाए तो रन लगे अब तक 20 पे 7, 20 लॉस ऑफ 7। लगातार हम अच्छे क्रिकेट की बात करते हैं, एशियन क्रिकेट लीग का ये भव्य दिव्य आयोजन। हैरी को सीसी वर्सेस विक्टोरिया ट्रैवल्स के बीच ये मुकाबला, अब तक का स्कोर 20 पे 7। नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। गेंद हवा में थी, देखना वहां पे फील्डर आएंगे, जब तक वहां से उठाएंगे 1 रन। नए बल्लेबाज आसिम के साथ ईशान। अब तक हम बात करें अगर आसिम के एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने अपने टीम के लिए रन बनाए, और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 21 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ईशान ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी के लिए आनंद गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी आनंद ने की है, 6 रन खर्च किए नो डाउट, लेकिन ये ओवर नंबर है 5। फिर से सीधा जड़ में, इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पे, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे जाके गेंद को फील्ड करे 1 रन। इस टूर्नामेंट का लो स्कोर है 33। अब इस तो मैच में हुए 22 रन, और ओवर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो आखिरी गेंद आनी बाकी है। हैरी के सीसी या और विक्टोरिया ट्रैवल्स के बीच ये मुकाबला, जहां पे ये कड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलता हुआ। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यहाँ पे गेंदबाज या फिर रियाज भाई नहीं, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट और नो, बाल बचे। स्कोर की बात की जाए, स्कोर पहुंचा अब 24 7 विकेट अब तक खोए टीम हैडी को सीसी ने। 5 ओवर की समाप्ति। पांच ओवर 24 रन 7 विकेट। चला थोड़ा कम कीजिए टीम मीटिंग्स, थोड़ा सा प्लीज
ध्यान रखें टाइम के ऊपर भी, आपको टाइम भी मद्देनजर रखना होगा, ये ध्यान रखें। आखिरी ओवर, लास्ट 6 बॉल्स, और किसके हाथ में होगी ये आखिरी 6 गेंदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आनंद अच्छी, थोड़ा सा महंगा साबित हुए अगर हम स्कोर को थोड़ा सा कंपेयर करें तो, क्योंकि 9 रन उन्होंने खर्च किए। सबसे अच्छा स्पेल इस पूरी टूर्नामेंट का अगर कहा जाए तो फवदुल्ला के नाम है, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। ये मुझे नहीं लगता, ये सबसे बड़ा उलटफेर। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पे कीपर से चूक हुई है, ये रन मिलेंगे मिस्टर एक्स्ट्रा। ये स्पाइस के संकेत मिलते हुए स्कोर मूव्स ऑन। अब एक एक करके स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा अब 25 पे 7। इस टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर है 33 और अभी भी 4 गेंदें आनी बाकी है। हैडी को सीसी क्या वो, ये विक्रम, हम विक्रम नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा ये चूपता है। अगर ऐसे विक्रम होते हैं कम रन वाले तो वो मन में चूपते हैं। और व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, सीधा जड़ में, मैं झुकेगा नहीं साला। और अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 पे 7। अभी भी इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में 3 गेंदें आनी शेष है। लगातार अच्छी गेंदबाजी। आसिम इस बार गेंद को खेला, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट नहीं, 1 रन, चुराया हुआ रन, रिस्की रन था, लेकिन ये दिल मांगे मोर और मैच भी बहुत मांग रहा था। हमारे सारे जो हम कहते हैं कि इस पूरी टूर्नामेंट को सफल बनाने में सभी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें शिजिमान भाई, रॉब भाई, विजेश, बिलाल, रश्मि, विकी, कासिन, बीनू, शिजू, हरी, राम और सफान, ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन आखिरी गेंद पर ये बड़ा सिक्सर मेहरबा देर कर दिया आते आते, 6 रन सिक्सर। स्कोर बना है 32 और ये भी अच्छी चीज कि ये अपने नाम पे जो सबसे लो स्कोर है उसे नहीं रखना चाह रहे। 32 ऑन बोर्ड। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, वहां पे फील्डर ने फील्डर को जिस प्रकार से थ्रो आया है, और ये 2 रन तो 34 और ये तीसरा भी पूरा तो 35। 35 ऑन बोर्ड एंड 36 इज अ टारगेट। 36 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा जब बल्लेबाजी के लिए आएगी यहां पे टीम विक्टोरिया ट्रैवल्स। तो अगले मैच के टॉस की तरफ भी बढ़ेंगे।
मैच की अब मलक्कन स्टार्स और दूसरी जगह हम फ्लाइंग ट्रेवल्स, इनको देखने वाले अगले मुकाबले में। दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आपको टॉस के लिए आना है। ये मैच अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज। निजामुद्दीन सर, आपका स्वागत है। हमारे एसीएल कमेटी के चेयरमैन यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत है। एक बड़ा मुकाबला और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर। एक टोयोटा गाड़ी का हमें यहाँ पे चाबी मिला है, किसी भाईजान का है जो मैच देखने आए हैं, वो प्लीज आके यहाँ से कलेक्ट करें। पहले उसका वो मैच करे आपकी गाड़ी के ही की है या नहीं, और उसके बाद आप आए प्लीज। चलो मैच की ओर बढ़ेंगे। यस अंपायर, ज्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि टाइम तो अब हो चुका है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर जा चुकी है। विक्टोरिया ट्रैवल्स के लिए कोई बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन छोटे टोटल बड़े होते हमने देखे हैं। तो क्या ये मुकाबला कितने दूर तक जाएगा, ये देखना होगा। यस, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अनूप अब यहां पे आती हुई मुसव्विर और आसिफ। मुसव्विर ऑन स्ट्राइक, पहला ओवर देखना किसके पास दिया जाएगा। उबैद, उबैद के पास अब पहली गेंद है। उबैद, क्या इनके पास भी वो क्षमता है, अच्छी गेंदबाजी ये कर सकते हैं, और किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे भी देखना होगा। मजा आने वाला इस मैच में, नो डाउट कि ये मुकाबला तगड़ा होगा। मुसव्विर ऑन स्ट्राइक, उबैद पहला ओवर लेके 36 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य, लेकिन क्या वो बड़ा बनेगा। पावर प्ले ऑन है, खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आप देख सकते हो। एक मिड ऑफ, मिड ऑन, पहली गेंद, ये बहुत ही अच्छी अच्छा ड्राइव है। ये हम हमेशा कहते हैं जब एक कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो वो जो उनका स्टांस है, उनका खेलने का तरीका है, वही बताता है कि वो प्लेयर कितना खास है। यही वो बैटर बताता है, और जिस प्रकार से गेंद जहां पे थी वहां पे जाके खेलना मेरिट से, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। मुसव्विर ने वो दिखाया, पहली गेंद पे रन को अपने का हासिल किया और अपने टीम का और अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पे होंगे आसिफ, 36 रनों का लक्ष्य का पीछा है। और इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है। बैंक बैलेंस कम है, खर्चा कम करना होगा उबैद भाई। ये वाइड, स्कोर मूव्स ऑन टू, 36 रनों का लक्ष्य का पीछा है। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे हैं 2 रन। आप देख रहे हो प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये तीसरा दिन, पहला मुकाबला। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 2 रन।
अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज पूरी तरह से चारों खाने चाहिए, तो उम्मीद को यही करना होगा। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 2 पे रुका हुआ स्कोर। हाँ, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, जगह बनाई अपने लिए, थोड़ा सा वहां पे फंबल और 1 रन चुराया। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, एक के साथ ये गाड़ी बढ़ती हुई विक्टोरिया ट्रेवल्स की। विक्टोरिया ट्रेवल्स के जो गाड़ी है वो सिंगल सिंगल से आगे बढ़ रही है। एक वाइट था, उसके बाद एक सिंगल। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे हैं 3 रन। आप देख रहे हैं प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग का भव्य दिव्य आयोजन। हमारे टाइटल स्पॉन्सर जस्ट अस एंड ऑटो, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। ये छोटी गेंद थी और इस छोटी गेंद को खेल नहीं पाए। डॉट बॉल, ये है वो तेज तरार गेंदबाजी, इसके लिए वो जाने जाएंगे और यही करते हुए अपना काम बखूबी निभाया उबैद ने। हालांकि एक वाइड जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी गेंदबाजी। ये पहला ओवर अब तक मैं कहूंगा हेडिको सीसी के नाम होता हुआ। लास्ट बॉल है, अभी भी आखिरी गेंद। उबैद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं, ये प्रेशर है, ये प्रेशर को रिलीज करना है। और ये प्रेशर को रिलीज कैसे करेंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार गेंद को आने दिया, जगह बनाई, प्लेयर है वहां पे, फील्डर है वहां पे, उन्होंने गेंद को देखा और उसके बाद 1 रन मिलेगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहला ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 4 रन बिना कोई नुकसान। ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 4 रन। विजीश भाई ने अपना काम किया है, आज बॉल बॉय का काम कर रहे हैं, थैंक यू। इस बार गेंद को आने दिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। 2 रन का कॉल है और 2 रन पूरे कर लेंगे। गेंदबाजी में खुर्शीद को बुलाया गया, खुर्शीद की पहली गेंद पे 2 रन यहाँ पे हासिल किए। और स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 6 रन। खुर्शीद, इस बार गेंद फिर से पैरों पे करने की कोशिश, गेंद को खेला, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा अब 7 रन। थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ सजावट होती हुई और ये ओवर नंबर दूसरा है, इसका मतलब है कि आप यस फिर से मैदान की ओर जाएंगे, क्योंकि मुकाबला तो तगड़ा है, नो नो डाउट। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज
खुर्शीद। इस बार गेंद को खेलना चाहते लेग स्टंप के बाहर, वाइड। स्कोर मूव्स ऑन 8। 8 रन स्कोर कार्ड पे लगे हैं। ओवर नंबर ये दूसरा चल रहा है। पहले ओवर में 4 रन आए थे, इस ओवर में अब तक 4। और गेंदों की बात की जाए तो गेंदें सिर्फ हुई है 2। फिर से गेंदबाज तैयार अगली गेंद लेके। ओहो, व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद आउट ऑफ द पार्क, एसीएल सिक्सर। इसी की जरूरत थी और आसिफ ने कहा कि भाई मैं तैयार हूं। व्हाट अ बैटिंग। स्कोर मूव्स ऑन 14। आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ आज के दिन का ये पहला सिक्सर, दूसरा सिक्सर इस इनिंग का ये पहला है। और पिछले इनिंग में एक सिक्सर जरूर लगा था। करेक्शन 14, नो लॉस। फिर से पैर पकड़ने की कोशिश, गेंद को फिर से खेला मिड विकेट पे। खिलाड़ी है, फंबल होगा नो डाउट, क्योंकि काफी फासला तय किया है और ये 2 रन भी पूरे होंगे। स्कोर मूव्स ऑन 16, 16 रन अब तक। फिर से छोटी गेंद, हवा में गेंद है, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। ये 1 बाउंड चौका मिलेंगे, 4 रन यहां पे जरूर मिलेंगे। और स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे हैं 20 रन। इस मुकाबले को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज आसिफ, क्योंकि जल्दी खत्म करेंगे तो घर भी जल्दी जाएंगे यही कुछ वो बताते हुए। सुपर सैटरडे, सुपर सैटरडे का मतलब फैमिली के साथ। स्कोर मूव्स ऑन 20, 20। 16 रनों की जरूरत अभी भी। फिर से बड़ा स्ट्रोक, गेंद को पहुंचा दिया आउट ऑफ द पार्क। आसिफ का बल्ला, माशाअल्लाह, व्हाट बैटिंग। स्कोर मूव्स ऑन 26, 26। यही तो इस गेंद की खासियत है। जब हम सुप्रीमो सिक्सर के बॉल की बात करते हैं तो ये गेंद काफी ट्रैवल होती है, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा हूं कि भाई यहां पे रन आ क्यों नहीं रहे। क्योंकि इस पूरी टूर्नामेंट की बात करें तो अब तक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है 83 और लोएस्ट स्कोर है 33। तो ये 50 का डिफरेंस कैसे आ सकता है, वो भी थोड़ा सा मन थोड़ा सा यहाँ पे चिंतित होता है कि भाई क्या हो रहा है। 2 ओवर 26 रन। खुर्शीद का ये ओवर काफी महंगा, 22 रन इस ओवर से, जिसमें 2 छक्के 1 चौका। और साथ में 19 पे जाके बैठ चुके हैं बल्लेबाज आसिफ। दस की जरूरत अब मुकाबला जीतने के लिए। आने वाले 24 गेंदों में ये ओवर नंबर तीसरा, क्या इसी में खत्म करने की कोशिश करेंगे अपने रन रेट को सुधारने के लिए। और रियाज भाई का तो वही इंटेंशन रहता है कि भाई मैच को जल्दी खत्म करो और रन रेट को सुधारो। ये खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद को ना देखा ना परखा, अक्रॉस द लाइन। हमारे पीछे कोचिंग क्लासेस है, वहां पे हमेशा ये सिखाया जाता है बैटर को कि भाई अक्रॉस क्रिकेट इज अ बैड क्रिकेट। लेकिन अब जो T20 आया है उसमें ऐसा ही क्रिकेट खेला जाता है, और टेनिस क्रिकेट में ये तो पहले से होता है। वो मुझे ऋषभ पंत का सिक्सर याद आ रहा है अभी जो गावस्कर ट्रॉफी में। ये गेंद हवा में है, फील्डर दूर है, सिंगल मिलेगा, दूसरे की मांग नहीं है। आसिफ कह रहे हैं कि मैं खेलना चाहूंगा। स्कोर मूव्स ऑन 27, 27, 9 की जरूरत। इसके बाद वाला मुकाबला भी काफी रोमांचकारी होने वाला है नो डाउट, और वो भी तैयार हो चुके हैं अगले मुकाबले के लिए। स्कोर मूव्स ऑन 20। इस बार गेंद को पीछे रखा, बल्लेबाज को सरप्राइज किया। ये अच्छी गेंदबाजी है, लाजवाब गेंदबाज करते हुए हेडी को सीसी के। ये मुझे थोड़ा सा ऋषभ पंत की याद दिलाने वाले थे, लेकिन नहीं, गेंद बल्ले पे नहीं आई। 1 रन लेग बाइक के संकेत। स्कोर मूव्स ऑन 28।
स्कोर मूव्स ऑन 28, 28 रन। अभी भी 8 की जरूरत है। स्ट्राइक पे होंगे अब बल्लेबाज मुसव्विर। खराब गेंद है, वाइड बॉल है। इस गेंद को बाहर भेजना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। वाइड, इट्स वाइड। स्कोर मूव्स ऑन 29, 29। ये यही तो चाहिए था उनको। ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, एसीएल सिक्सर। स्कोर लेवल होता हुआ 35। हमारे जगेश मेहर को भी दिखाते हुए कैमरामैन, धन्यवाद। मनीष निजाई। एक की जरूरत है और इस ओवर की बात की जाए तो टारगेट इतना दूर नहीं है। अब इस मैच में टाइम आउट नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक ही रन की जरूरत है, तो टाइम आउट नहीं लिया जाएगा। मैच थोड़ा सा वहां पे स्टार्ट होगा। एक की जरूरत है और गेंदे हैं 18। रियाज भाई काफी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया और उनकी एनर्जी इस हर मैच में हम पिछले साल भी मैंने रियाज भाई को देखा, इस साल भी देख रहा हूँ। एनर्जी लेवल उनका कभी कमी नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं एज इज ओनली नंबर। 35। गेंदबाजी में अब पहली गेंद, लाजवाब स्ट्रोक और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चौका। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है विक्टोरिया ट्रैवल्स। वेल प्लेड विक्टोरिया ट्रैवल्स एंड हार्ड लक हैडिको सीसी। आपका सफर अभी भी शुरू है क्योंकि हर टीम के लिए 3 मैचेस है, तो यहाँ पे इस मुकाबले को जीत लिया है विक्टोरिया ट्रैवल्स ने। लगभग 10 विकेट से यह सबसे बड़ी जीत होगी इस टूर्नामेंट की। धन्यवाद।
यस, मैच अब शुरू शुरू होने जा रहा है। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है उसके पास भी हम ज़रूर यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं नेक्स्ट मुकाबले में। मलकन स्टार्स, आपके बल्लेबाजों को भेजना है प्लीज जल्द से जल्द। मैच स्टार्ट हो चुका है क्योंकि फील्डिंग करने वाली टीम अब अंदर जा चुके हैं, प्लीज। आशिक ओबीजी, इनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा फवदुल्ला को, जिन्होंने 2 ओवर 2 विकेट और 3 रन खर्च किए। इस पूरी टूर्नामेंट का सबसे अच्छा इक्वेशन आपको देखने को मिला, बॉलिंग फिगर आपको देखने को मिला। वेल प्लेड फवदुल्ला। जाएंगे मैदान की ओर जहां पे मल्लखंड स्टार्स और दूसरी जगह फ्लाइंग ट्रेवल्स आमने सामने होंगे। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले में हम तैयार हो चुके। प्रारंभिक बल्लेबाज अब बीच मैदान पे जाने के लिए तैयार है। मल्लखंड स्टार्स और दूसरी जगह फ्लाइंग ट्रेवल्स के बीच मुकाबला, बड़ा मुकाबला। आशिक ओबीजी फवदुल्ला को मैन ऑफ द मैच अवार्ड यहां पे देते हुए। यस, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के लिए जा चुकी है मल्लखंड स्टार्स की तरफ से। अब जैनू और उनके साथ देखना होगा डैनियल। ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आ चुके हैं और पहला ओवर जवाद, पहला ओवर लेके ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही टीम के काफी अच्छे प्लेयर्स है। मल्लखंड स्टार्स और फ्लाइंग ट्रेवल्स के बीच ये मुकाबला है। दोनों ही टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छा क्रिकेट खेलें। पहला मुकाबला लो स्कोरिंग हुआ था, ये मुकाबला कहाँ पे जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का, फैमिलीज का हम प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग ACL सीजन 3 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये पूरी टूर्नामेंट एक माहौल बनाता है कतर में, जो क्रिकेट के प्रति एक हम कहते हैं कि उत्सव मनाया जाता है और इसी उत्सव में हम सब आते हैं, एंजॉय करते हैं। गेंदबाजी के लिए जवाब,
जैनू के लिए पहली गेंद, पैर पकड़ने की कोशिश, गेंद को हल्के हाथों से ढकेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जाके गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी जाके गेंद को उठाए, तब तक 1 रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला है। जैनू और डैनियल, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मलकंद स्टार्स की तरफ से। दूसरी जगह फ्लाइंग ट्रेवल्स, आप देख रहे हो एसीएल, जिसका सीधा प्रसारण एसीएल दोहा कतार यूट्यूब चैनल, और दूसरी जगह श्री लाइव वीडियोस पर आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हो। गेंदबाजी के लिए जवाब सामने, अब डैनियल, जवाब की गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज चूके पूरी तरह से, अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी लगातार होती हुई। ये होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी गेंदें करोगे तो सामने वाली टीम के लिए थोड़ा प्रेशर बना सकते हो, खास करके जब हम बात करते हैं प्रारंभिक ओवर यानी पावर प्ले के ओवर में आपको बल्लेबाज को रोकना होता है। लोअर फुल टॉस गेंद पैरों पे की, उस बार इस गेंद को हल्के हाथों से खेला जब तक बिडॉन के खिलाड़ी गेंद को उठाए। डैनियल ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब तक 2 रन। मलकंद स्टार्स और फ्लाइंग ट्रैवल्स के बीच ये मुकाबला, आज के दिन का मुकाबला नंबर 2, इस टूर्नामेंट का मुकाबला नंबर 10। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 51 मैचेस टोटल होंगे, 51। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी। मलकंद स्टार्स और फ्लाइंग ट्रैवल्स ये मुकाबला खेलने, मुझे लगता है अभी भी इस मैच के बाद 2 मैच आने वाले हैं। जो फर्स्ट राउंड यानी हम हर टीम को एक एक मैच पहले खिला रहे और खेल रहे, तो अब वो 2 मैच बाकी है अभी भी। इस बार गेंद को आने दिया, दिशा दे दिए गेंद को, फील्डर है गली से गेंद को उठाए, तब तक 1 रन। स्कोर 4 पहुंचा, अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 3 ऑन बोर्ड। ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला, गेंदे हुई अब तक फौदुल्ला जो अब यहाँ पे मैन ऑफ द मैच रहते हैं, उनको 100 रियाल का इनाम दिया गया है विक्टोरिया ट्रेवल्स के ओनर की तरफ से। इस बार एक खराब शॉट सिलेक्शन, अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, डॉट बॉल, और ओवर यहाँ पे पहला समाप्त होता हुआ, पहला ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 3 रन। मैं पहले मैच में बहुत खुश हुआ था क्योंकि रन बहुत अच्छे बन रहे थे, 83 वाला वो मैच था, और वो रन चेस भी हुए। हमने जब वो मुकाबला देखा रन चेस भी हुए, लेकिन अब जब मैचेस आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि रन बन ही नहीं रहे। अब तक का स्कोर देखा जाए 3 रन। मलकंद स्टार्स की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती हुई, पावर प्ले में रन नहीं बने, लेकिन हम हमेशा कहते हैं अभी भी 5 ओवर का खिलाना बाकी है, यहाँ से बहुत कुछ बदल सकता है, बदलेगा, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे बदलेंगे ये भी काफी मायने रखेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जवाद ने अपना काम बखूबी निभाया, जवाद के साथ बिपिन, बिपिन अब नए गेंदबाज आए हैं। किस प्रकार से बिपिन गेंदबाजी करेंगे ये भी देखना होगा। पहली गेंद खराब है और ये अंपायर के संकेत आते हैं वाइड। 2 रन प्लस होंगे नो डाउट।
इस बार गेंद को छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा ये तो वक्त बताएगा। स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ, स्कोर कार्ड में रन बन रहे। अच्छी गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं देखने को मिलता हुआ। एक रन तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। स्कोर आगे आगे बढ़ता हुआ, स्कोर चाह पहुंचा अब 6 रन, 6 ऑन बोर्ड। फिर से इस बार नो लुक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट बॉल। आहा, अच्छी गेंद। बल्लेबाज को ये सवाल पूछती हुई कि भाई इस गेंद को खेल सकते तो खेलो। लाजवाब गेंदबाज विपिन अपना कंधे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंद को पीछे रख रहे हैं। मलकंद स्टार्स को थोड़ा सा परेशान किया है गेंदबाजों ने। बल्लेबाजी में दमखम लगाना होगा जैनू और डैनियल को। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आ रही है। एक एक रन से कारवा आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा अब 7 रन, 7 ऑन बोर्ड। लगातार रनों की भूख को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि ये पहला मुकाबला है। नो डाउट इस टूर्नामेंट में आप पहली बार खेल रहे हो इस सीजन में, तो थोड़ा वो प्रेशर होता है नो डाउट, लेकिन आपको वो प्रेशर थोड़ा सा कम करना होगा और रन बनाने होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मलकंद स्टार्स और दूसरी जगह हम देख रहे हैं टीम फ्लाइंग विंग्स ट्रैवल्स, ये दोनों आमने सामने। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक वहां पे, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं। पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बैकवर्ड पॉइंट पे, वहां से गेंद को फील्ड किया। 1 रन, ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लेंगे 8 रन। आप देख रहे हैं प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग। हमारे सारे जो कमेटी मेंबर्स है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले तो हमारे सारे हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हमारे सारे जो कमेटी मेंबर्स है काफ़ी अच्छा काम करते हुए। और जहाँ पे हम जैसल भाई, दूसरी जगह हम देख रहे हैं रमजी भाई, रियाज भाई, शिजीमान भाई, रौब भाई, विजेश, बिलाल, रश्मि, सफान, विकी, कासिम, बीनू, शिजू, हरिहरन एंड राहुल, इनको नहीं भूल सकते। पिछले साल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे थे ये डीजे वाले बाबू है हमारे, वो उन्हें नहीं भूल सकते। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा अब 9 रन, 9 ऑन बोर्ड। बड़े स्ट्रोक की तलाश के, लेकिन विकेट, प्रेशर बन रहा था और प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाए। और बल्लेबाज डैनियल बैक टू द पवेलियन। डैनियल ने 7 गेंदें खेली, 3 रन अपने टीम के लिए बनाए और ये आउट होके लौट रहे हुए। विकेट नंबर पहला आता हुआ टीम मलकंद स्टार्स के लिए। और फ्लाइंग ट्रैवल्स की गेंदबाजों की तारीफ करूंगा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है।
मलकंद स्टार्स वर्सेस फ्लाइंग ट्रैवल्स के बीच ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला जहां पे हम देख रहे हैं। और लगातार हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में रन कम बन रहे। क्यों कम बन रहे उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा बल्लेबाजों को। क्या वो गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नए बल्लेबाज शारिक शारिक स्ट्राइक पे आएंगे। नए बल्लेबाज है, ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं शारिक, और उनके सामने गेंदबाजी के लिए अभी जो आए हैं अभी, और लिया विकेट अभी अभी गेंदबाजी के लिए, और उनके सामने बल्लेबाज शारिक। राइट राउंड विकेट। पहली गेंद पे अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश। पहले आए हैं तो हम हमेशा कहते हैं जब आप पहले आते हो थोड़ा गेंद को रीड करो और उसके बाद मन चाहे स्ट्रोक खेलो। फिर से अभी ऑप्शन, फिर से पैर पकड़ने की कोशिश। पहला रन तेजी के साथ भागे, बॉलर खुद दौड़ रहा है, दूसरे की मांग, और ये क्या दूसरा पूरा होगा? यस, दूसरा भी पूरा हो चुका है। ये देखिए क्लियर है, आप फिर से स्क्रीन पे देख सकते हो जिस प्रकार से ये थ्रो आया था। आसानी के साथ बल्लेबाज पहुंच चुके थे और अच्छा थ्रो, लेकिन बल्लेबाज देखिए सुरक्षित बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। जब तक गेंद आए तो उससे पहले ही पहुंच चुके थे। स्कोर की बात की जाए 11 रन 11 ऑन बोर्ड। मलकंद स्टार्स अब शरीक आने के बाद थोड़ा सा रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश शरीक करेंगे, और उनके सामने है जैनू। जैनू और शरीक ये जोड़ी तो गेंदबाजी के लिए अभी जो आए हैं अभी, और विकेट भी अभी लिया है उन्होंने। अभी कुछ अलग खेलना चाह रहे थे, जिस प्रकार से जगह बनाई, फिर इस गेंद को फाइन नेक में खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हुई, तो एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। लेग बाय के संकेत है अंपायर ने कहा, और स्कोर मूव्स ऑन 12 एक विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। इसके बाद तीसरे ओवर के बाद हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के और बढ़ेंगे। रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, उसके बारे में भी चर्चा होगी। हर साल कुछ अलग। हाँ, अच्छी गेंद, फिर से बल्लेबाज को मौके नहीं मिल रहे। लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी आसानी के साथ टहलते हुए गेंद को फील्ड करेंगे। दोनों बल्लेबाज टहलते हुए रन को पूरा करेंगे। स्कोर कार्ड अब धीरे से आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 13 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। गेंदबाज फिर से तैयार। अभी ये धीमा गेंद था, बल्लेबाज ने उस गेंद को पढ़ लिया, फिर जड़ लिया, लेकिन एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर 14। 3 ओवर की समाप्ति। यस, रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अंपायर ने कहा है, तो हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरफ बढ़ेंगे। आप कहीं ना जाए, देखते रहे प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग का ये तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। धन्यवाद।
Good evening, everybody. To Absolute Sports Ground, we are back here in the Combox. Malakan Stars 3:31:42 from 4.1 hours. Sharik and Shahid try to go for reverse. It's wide. Call by umpire. Second match of Asian Cricket League Season 3. Progressing here in Absolute Sports Ground. Sharik 6 from 6. And Shahid yet to open his score on the bowling Sajir. It's right on the money, perfectly executed delivery, offside. It's day number 3 of Asian Cricket League Season 3 brought to you by Premier Techno Media. And the title spawn just as an auto. A good match in progress. 32-2. Here we go. It's a big shot. Up in the air. Chance and taken a bit of juggle and managed to grab the ball in the final second. Another wicket goes here for Malakan Stars. And the Flying Travels managed to get the third wicket. That's all happening here in Absolute Sports Ground, Qatar. Day 3, game number 2 of Asian Cricket League. We are live in YouTube. You can watch from anywhere, all the cricket actions. ACL Doha brings all the live actions right here from Absolute Sports Ground, Ryan Amazoni Cricket Academy, Qatar. Once again, welcome everybody, all the cricket lovers, to the day number 3 and the game number 2. Victoria Travels winning the first match of day number 3 and moving to the second one. And after this, there'll be 2 more matches to be completed tonight. Saeed straight away off the mark, driven to the covers. There is protection. And they completed a couple of runs. Good running between the wickets. Saeed Yaqub from Malakan Stars. MST 34-3. Yes, they got to reload this one. This beautiful weather continues in Qatar. So no wind is going to support the batters. You need to really work hard to get those long on and long off boundaries. It's given wide, another extra to total. As 35-3. A 6 overs match into the 4th over. There'll be 2 more overs after this. That's driven nicely. They will not be able to stop this. Long off was very wide and exactly he knew what he was doing. Deposited through the gap in, finds an handsome boundary. Would be targeting at least 65 to 70 runs. The last ball of this over. One to go. And good evening, Mr. Chirag. That's a big shot through the gap. One bounce to the field and deep mid wicket. Yes, no one settled down firmly for a single. And the completion of the first 5 overs on after this. MST
Has 1 over to complete this innings. Its 5 overs have been bowled, 44-3. One more over to complete this innings, and can we have a look at the timer as well? Captain and umpires, please have a look at the timer. I have only 4 minutes and 40 seconds left. Yes, you got 4 minutes. You need to complete one more over. A very good evening once again, चिराग जी कैसे लग रहे हो आप? आज का दिन third day of Asian Cricket League Season 3. Score at this moment 4-0, 40, and one more over, last over. Up in there, easy one. He's not going to miss those, and soft dismissal. Another batter walks into the dugout. And MST loses another batter. Just have 40 runs. They would be eyeing on at least 50 runs from now. 5 deliveries left. If you can manage to get 10 more runs, they will have a decent runs under their belt. It was a low scoring game in the game number 1 as well. Now we're moving to the game number 2, and 2 more games to complete, being the third day of Asian Cricket League Season 3. Brings all the live action in YouTube channel as well, ACL Doha. As Muhammad Jahangir joined there in the middle. Saeed to bowl the final over. It's 41 for 4. That's not getting enough timing on this occasion. Catches a goal, tough one. Failures from the backward point, had to run few yards towards his left. Just managed to get a single on this occasion. It was the back of the length delivery. It's not giving any room for the batters to freeze his arms. Who will be looking forward to restrict the opposition. Less than 50 runs. Edge and taken brilliantly behind the stump. Khalifa making no mistake. Time jump, and that's how you get rid of the bat. Finally, it's going to go for big shots as expected in the final over. Just managed to get a genuine edge. And Khalifa is spot on. Another wicket goes here for MST. 43 for 5. I've left with only few deliveries now. Just 2 legal deliveries left in this. If they can manage to get another boundary or a stick, they'll move to 50 plus. The pass score in this ground remains around 60. If you can score more than that, you will have a chance to win the match now. Couple of deliveries left. Would be targeting a big boundary. That's driven, and backward point will just cut it off. 2 was the call. Just managed to get a single, and a last ball coming up of this innings. It's 44 for 5. 1 to go. That's a good looking shot. Driven straight, and he's going to go for the second. He got enough time to come back. That's good running between the wickets in the last balls. 44 plus 2, 46 they managed to get from the allotted 6 overs. And the opposition team, well, they come out to bat and need 47 runs from 6 overs. We'll be having the chase very, very soon. I request the next 2 teams kindly get ready for the toss. As well done, the fielding team have done really well in terms of restricting the opposition team
less than 50 runs. If you look at the game number 1, 35 runs was easily chased down. The game number 1 of day number 3 of Asian Cricket League Season 3. Now we have 47 runs to chase down. It's all up to the bowlers if they really want to do some hard work, if they can restrict. We go to the game number 3 of day number 3, supposed to start at 9 p.m. Mabu QYCC taking on Yummy Taste Restaurant. Two captains, Mabu and Yummy Taste Restaurant captains, please be here for the toss, guys. A 2 minutes break and we'll be back with the chase. It's 47 runs to win from 6 overs. It's all happening here in Absolute Sports Ground, Ryan, Qatar, MS Dhoni Cricket Academy. And we have the chase 47 to win this match. A warm welcome, Mr. Hafiz. So let's quickly get back to the chase. Yes, after a short break, let's quickly get to the chase. Once again, thanks to all the sponsors of Asian Cricket League Season 3. A tournament to reminiscence, and there's 24 franchises and you have a lot of players participating. More than 900 players registered in this big tournament. Brought to you by Premier Techno Media and title sponsor Just As an Auto. A lot of sponsors for this event. Thanks to everyone. Red Apple Events and Media, Icon Training Center, Creative Edge, Absolute Sports, Visit Freight, Cargo and Relocation Services, Gulf Plan Sixer, Al Nool Trading, A Plus Contracting, EcoFresh, Mabu Contracting Company, Printech Solutions, Wada Trading, Symphony Events and Productions, DY Sports, Food Art Restaurant. You have the yummy food from their gift shop, iBath Sports and Tandoora King Restaurant. Welcome back everyone to Absolute Sports Ground. Two umpires controlling this game, Mr. Manzoor and Mr. Nias. Chase is on 47 from 6 overs. Two opening batters are walking to the middle. Yes, alongside with me, Mr. Chirag in the com box. 47 is it chaseable in the allotted 6 over. Chirag, kaise lag rahe ho aap? A scored 35 was easily chased down in the first match. A दूसरा game of day number 3. आपका स्वागत है शिलधर भाई और गुड इवनिंग सभी को वापस। और जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, मैं कभी भी शौक हो जाता हूँ कि ये गेंदे पहले मैच में 83 84 बने और उसके बाद ये सेकंड मैच से स्कोर काफ़ी कम हुआ है। और मेरे हिसाब से अब ये रनों की गति को कम करना या बढ़ाना ये अब प्लेयर्स के ऊपर होने वाला है। और मेरे हिसाब से इसके लिए थोड़ा सा बल्लेबाज को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा, उनको कहना होगा कि ऑल इज़ वेल।
खुद को यही बताना होगा कि मैं हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और यही भरोसा जता के अगर वो आगे जाएंगे तो ज़रूर मैचेस को जीत पाएंगे। अब इस मुकाबले की बात करें तो एमएचटी के लिए ये जो रन है जिस प्रकार से इन्होंने बनाया 46-46, ये भी एक अच्छा टोटल है मेरे हिसाब से। अगर रन नहीं बन रहे तो 46-47 इज ए टारगेट, तो 47 का टारगेट किस प्रकार से चेस होगा, ये सुनने के लिए हम जरूर बेकरार हैं। शैलदार भाई हमारे साथ जुड़े, सर आपका स्वागत है फिर से। बहुत धन्यवाद चिराग जी. As you rightly mentioned, as it's chaseable, it's easily chaseable. We have Mabuk UICC taking on Yummy Taste Restaurant in the next match right after this. I request two captains, Sharfuddin and Fairuz Bevinja. Two captains, please be here for the toss for the game number 3. And we are completing 4 matches tonight. This is the game number 2, second innings, 47 runs to win. Yes, Mr. Manzoor, the main umpire, are we ready to go for the chase? As flying travels, fly wings travels, make a pardon now. They are up to the challenge, 47 to win. Yes, umpire, let's go. Ball number 1. As Shahir off the mark towards a short fine leg. Alongside with him, Muttalif, 2 opening batters for Fly Wings Travels against MST. Zainu to start the proceedings. Nicely driven to the backward point. He'll just get a single. One of the players, one of the superb all-rounder playing in this tournament. Zainu as with the first over. And the time to welcome our official scorer, Mr. Rauf. Good evening to you, sir. I will be looking for early wickets, quick wickets. They are just having 47 runs to defend. That's a very good shot. Back foot and smashes toward the deep extra covers. Good fielding as well. Has pulled on time from the boundary line. That is what happens when you have a very good bowler, and also we have a good batter. With the back foot, it's not only the slogging, and got some real classic shots as well. Got big players playing in this tournament. That's a fuller length. Yorker, Zainu produced a perfect Yorker. Just managed to sneak a single on this occasion. Shahir and Muttalif, 2 opening batters. 5 for Nolos. 2 deliveries left in the power play number 1. They're chasing down a target of 47 from the allotted 6 overs. Conceded only 4 runs plus 1, 5. Has pulled away in style. The mid wicket will cut it off. I had enough time to go for the pull shot towards the mid wicket. It's one of the region you can clear. The boundaries can get easily towards that region. I would say it is the square leg and deep mid wicket. It's the shortest part of the ground. If you want to get those sixes, the long on and long off, you need to really time the ball right in the middle of the bat. Last ball of this over. Big shot. There is protection. Is he going to get it? Yes, it's a well-judged catch. The fielder was in the deep extra cover, is making no mistake. So what a good catch it was. Under the lights is never easy. And Sangam Zainu produced a much-needed breakthrough in the very first over.
As expected him to get the breakthrough, especially when they are defending a target of only 47 from the allotted 6 overs. Need to get early wickets. And he comes back to the dugout. We have a new batter, walks into the middle. That's Khalifa. Very good player you can have up front. Can we have the captain of Mabu, Mr. Farooz? Please be here, Farooz, for the toss. Mabu. Opposition team captain is waiting for you for the toss. It's coming back to this game, just 41 runs to win from the remaining 30. Khalifa just joined there in the middle. Just need to score more than 7 runs per over. The MST captain need to really work hard in terms of marshalling his troop in case they want to get 2 more quick wickets. Definitely the pressure will be on the batting team. It's all up to the momentum, how they can carry on from. As 6-4-1, we go to the over number 2. Daniel. Yes, looks like a spinner. He's got a pace off now. To Mutalif, 2 from 2. Just making a few adjustments in the field in the last minute. We have the toss for the next game. Driven nicely towards the long off. He'll cut it off. He's got fielders in the deep. There's only one backward point in the circle for the right-hand batter on the offside, and you have deep mid-wicket. The fine leg has been pushed towards the boundary line. They have a deep extra cover and the long on, long off. That was pretty much in the legs and asking the question, and the main umpire calls it's a wide. As Daniel produced, it was a quick one. Slow run up, but he creates a lot of pace. As far as fly wings. That's good pick up and travels in some distance. Disappeared from this ground. What a good shot. It looks like a sweep. That's sweetly timed right in the middle of it. It was in the slot for sure. I just had to deposit as one of the shortest region in this ground and clear the boundary in style. Move to 41. Khalifa with his first 6 of the day. And for the next match, Mabu won the toss and expected the captain to field first. The game number 3. This time much better. Very good shot towards long off, and he will get 2 more. Bit of fumble there. That's very professional approach from Khalifa. He got a 6 towards the mid wicket. Now he got a perfectly executed cover drive to deep extra, and that's how we get the runs flowing. You're chasing a modest target of 47 and got 16 already. 1.3. Daniel, 3 legal deliveries left in this over. Trying to go for a reverse sweep on this occasion. He played a couple of very good shots. One to the mid wicket, on to the extra cover. Has one more, 17 for 1, and 2 legal deliveries left in this over. It's Daniel, right arm over the wicket.
Nicely driven. Very well done. He knew what exactly he was doing. There's no fielder inside the circle, the offside. As long off and deep extra cover. And that's a possibility to get to ones and twos. That's what exactly he's doing. It's not a big score they're chasing. All these ones and twos definitely hurt the opposition team. Khalifa, 9 from 3 and includes that huge 6. And have a look at this one. Friendpool drives toward the same region. Just looks like you're playing a white ball cricket here. A perfectly executed front foot drive. 19 for 1. Just a matter of getting 28 from 24. Game number 2 progressing here in Absolute Sports Ground. Asian Cricket League Season 3. Day number 3. If you're watching live anywhere, live in YouTube, ICL Doha brings all the cricket action right here from Absolute Sports Ground live actions. A very professional team behind this production, all the way from India. Thank you guys. Chirag and his boys have done an excellent job. That's a long tournament. More than 900 players have registered in this, and all this setting up a real high standard. The rewards for the best 3 players towards the end of this tournament, it's going to be massive. 3 sports bikes, as we all know. So if you want to get hands on these 3 bikes, you need to be the best players in terms of the batting, bowling, and 1 man of the series. These are the rewards, which is precisely for the very first time in Qatar when a tennis ball tournament produces this kind of rewards. It's really massive, and Premier Techno Media is justifying themselves. They are one of the best in the business. So moving on. Sharik into the attack. Just push towards the point. That's brilliant cricket. Sensible. They're not going to go for unnecessary shots. It's all about ones and twos now. Mutalif. What we are seeing right there in the middle is perfectly executed partnership. They need to move on and capitalize on the momentum in spite of losing 1 big wicket right in the front. Sharik. Right arm over. Oh, catch was the call. It was swinging away from the right-hand batter. And no signal from the umpire. 24-1 after 2.2. Daniel conceded 13 runs in the last over. As Sharik to Mutalif. Oh, that's the reverse one. The last one swinging away. Now snip back into the right-hand batter. It almost looks like an in-swinger. A change of pace, variation is troubling the batter. What Flying Travels would be looking to break this partnership. It's really threatening at this moment. Just a matter of 47 runs. Need to get big wickets. They need to get a big wicket of Mutalif. This time catches the goal. Beaten the man in the backward point. You have a deep extra. 1 fielder there. The boundary line just cut it off for a single. So 2 runs coming from the first 4 deliveries. This is turning out to be a very, very good over from Sharik. So far so good, and Khalifa needs to say something very special to the bowler. I'm going to hit you. He has been bowling really well. Can he finish it off with 1 more dot? Is Khalifa is going to go for a big shot. And need runs in this over. Only 2 runs coming so far. And already into the midway of this innings. 21 for 1. Fuller length. Well played, just pushed towards the mid-on. 22 for 1, 1 more to go. And Mutalif
Had to find his first boundary. 7 deliveries, got 5. Last ball coming up. That's a catch, was the goal. A perfect execution. I finished this over in style with the dot. It's considered only 1, 2, 3 runs. As the timer will be on, that's a strategic timeout. The midway of this innings. After 3, it's 22 for 1. Let's have a look at the sponsors of this event once again. Thanks to the management of all the sponsors. Printech Solution Digital, our printing partner. I have the trophy partner, Tandoora King, authentic Indian restaurant in Qatar. Symphony, one of the best in the production of events. Sixer Supremo with the ball, sponsored by Sixer. The venue partner, Absolute Sports, MS Dhoni Cricket Academy in Qatar. Ibad Sports, gift partners for this event. And there are a lot of gift partners, gift shop, other trading, Ecoforce, ID Optics, food restaurant, and the title sponsor, the one and only Just Us and Auto. Strategic partner, Red Apple Events and Media. Associate sponsor, Icon Training Center, Center for Education and Training. Mabu Contracting and Company, WLL. Our associate sponsor, and A Plus Contracting, Infrastructure, Civil Construction and Planning. Creative Edge, associate sponsor, specialized digital marketing, and BK Freight, Cargo and Relocation Services. Gulf Plan, Trading and Contracting. And our Printech, our printing partner. Thanks to all the sponsors who made this event a big success. This is bringing up season 3 of Asian Cricket League. Score at this moment 22 for 1, and they need 25 more runs from the remaining 18 deliveries to win this match against MST. They managed to get only 46 from the allotted 6 overs. It's a beautiful partnership is progressing here between Khalifa and Muttalif. 12 for Khalifa and 5 for Muttalif. And Saeed has been introduced into the attack. What the bowling team would be looking for to break this partnership is really threatening. We had a low score game. The game number 1, 35, was easily chased down. It is below 50. It looks like they're going to chase this as well. 25 from 18, it's very simple equation for the batting team. They have plenty of wickets left. Try to pull that on this occasion, beaten completely, and it's a dot ball to start this over. Saeed. As moving on, Saeed to Khalifa. Driven nicely, is one of this region. He's scored so many runs this evening and converting. Chance for a run out. Bit of fumble. Has he got the man? Oh, looks like maybe misjudged to catch the ball and is never able to bang it on the stump. It looks like an easy chance. Should have been a much better throw. 24 and 23 runs to win. Side again to Khalifa. Up in there, leading edge, and bowler says, thank you so much. It's an easy catch, it's been taken. It's not going to miss those, and that's what they needed. Need to break this partnership. And Saeed produced an important wicket, a much needed one.
just in the chase of 23 runs to win from 15, and maybe little late to get this wicket. The progress to a very, very good partnership, and finally he needs to come back, and one of the best batter in Qatar when it comes to tennis ball. Jersey number 11. He hails from Trivandrum, Kerala, where Sanju Samson is coming from, one of the best all-rounder. Jawad into the middle. Can't ask for a much better batter at this time. The stage has been set for Jawad to go and flourish with all. So it's very strong on onside and offside as well. He's not going to take any risk. He's going to play his natural game. It's very strong on his pads. Anything which drifts towards his legs going to punish. And the side need to be careful. 23 from 15 for flying travels to get through the line. Other side produce an important breakthrough. Can they capitalize on the momentum they got? In terms of taking the second wicket, 24 for 2. Zainu making some adjustment in the field. He knows this player really well. Long on and long off. These are the two regions. He is very strong on straight bat. Oh, right to the stump. That was a full toss. Would you believe that, Chirag? That's absolutely banged on the stump. Jawad had absolutely no idea what it is. Very, very quick from side, and he produced a very, very important wicket. And Jawad had absolutely no idea what he was doing. It's completely beaten onto his stump. It looks like a leg stump, and middle stump was just gone for the toss. Moved 24 for 3 now. All of a sudden, the bowling team would believe that they can get somewhere in the driving seat. 0-2 wicket, and wicket. He is on a hat-trick. Side 4 deliveries, 2 runs and 2 wickets. And Jawad walks back into the dugout. Sajir joined there in the middle. Maybe it was a lot of build-up when he walked into the middle. The batter is coming back without troubling the scorer. 24 for 3, flying travels. 23 to win as well from 14 deliveries. 23 from 14. That's the equation. Sajir, lefty. He's on a hat-trick. Hey, he's on a hat-trick. Can he get one more big wicket? Get the first hat-trick of this tournament. All eyes on side. Couple of deliveries left in this over. Just consider 2 runs. Here we go. Hat-trick ball. Oh, just looked like, was there any edge? It is flying away from this left-hand batter. Outswing delivery. Right on the money. And this over could be one of those over they've been looking for, defending a target of 47. This is what exactly a champion bowler can produce. 1 to go. Swing and a miss, and it's a wide. He got to reload this one. After bowling superbly, just need to finish 1 dot delivery is given wide. 25 for 3, just 22 to win from the remaining 13 deliveries. So 1 legal delivery left, and after this there are 2 more overs. The equation looks still simple, but if they can get 1 more wicket, they'll be pretty much. Another very good delivery to complete this over. Brilliant bowling performance. Side 1 over, 3 runs and 2 wickets. Have a look at the timing. Just 9 minutes and 48 seconds left, guys. Flying Travels move to 25
for 3 after 4 overs. That means they need 22 runs from the remaining 12. 22 from 2 overs. Once again, thanks to all the sponsors, thanks to all the spectators who comes in very good number, being a Saturday. A working day for all of us. Tomorrow we can expect a few more people to come in to watch their favorite players. It's more than 900 players registered in this tournament. Please have a look at the time. Captains and umpires. Just 9 minutes left. They need to complete 2 more overs. And what they need is 22 runs. As they're going to bring another bowler, jersey number 7. As expected, the captain to bring one of these same bowlers, Sharik. Very good delivery. Right, length and line. Oh, that's very good running. Good running. Supposed to be just one that ran for the first one quickly. That's the key. Now they need to convert those ones into twos. They can easily get through the line. Just 20 runs required now from 11 deliveries. Mutalib 7 from 9. And Sajid just joined their head to find his first run. Up in there. Who wants this? Easy catch and taken. A shot third man. Making no mistake. It's a leading edge. It was a back of the link delivery. Wanted to pull and just managed to get an edge. An easy catch has been taken. Another wicket goes. As expected, this man to come and bowl his second over. Sharik produce another wicket. .2 and 27 for 4. 10 deliveries left and 20 to win. 20 from 10, it's very simple. The question is whether I will have one good partnership from the remaining deliveries in this innings, and they can get through the line. They don't need to play anything silly here. They need to be sensible. Sharik 1.2, 5 runs and a wicket. Toma trying to go for the mid-wicket, beaten completely. You're facing the very first ball. Looking for across the line shot against a pace bowler who is bowling pretty much outside the off stump. Nine deliveries left and 20 runs more to win. It's going to go down to the wire. If they don't concede so many runs, we'll have a thrilling finish to this game. As a fuller length, goes to the long off region. Just a single, they don't mind this. Captain really don't mind singles at this moment. Talking about 19 from 8. They don't want to concede boundaries. Just 5 minutes and 44 seconds left to complete his innings. Got one more over to play. The case, the dot ball. If we can get 1 or 2 dot balls, Sharik. The final over will be very, very interesting. And to the left-hand batter over the wicket. Oh, I wanted to say, waiting for the umpire's call. Was there any bat involved? It's a leg by call. .29 for 4, 18 required from the remaining 7.
Umar just joined there in the middle. 1 from 2. Please pay attention to the lady screen. The timer 4 minutes and 30 seconds. That's a very good shot. 2 fielders, long on and long off. Good fielding effort there. Completed 2 more. Good running. 31 for 4. After the completion of the first 5 overs, 31 for 4 wickets. And you got 4 minutes left. You have 6 deliveries left, and you have 16 more runs to win. 4, 6 and 16, 3 numbers, remember. $16 from 1 over. It's going to go down to, it's a low scoring game. 35 was easily chased in the first game. The second game 47. लास्ट 6 बॉल में 16 रन चाहिए. क्या क्या लग रहा होगा आपको? सर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है. क्रिकेट में हमने हमेशा देखा है कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है. और अब यहाँ से आखिरी ओवर ये काफ़ी महत्वपूर्ण का फारूक का. और साजिर और उमर अब तक उन्हें उतनी लय नहीं मिली है, लेकिन ये बैटर ज़रूर ये सोचेंगे कि भाई मैच को ख़त्म करें, क्योंकि सिचुएशन वैसा है. गेंदबाज फारूक 47 का लक्ष्य का पीछा. इसका मतलब है कि अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक ही चाहिए, और बड़े स्ट्रोक खेलने तो फिर आपको उतना बड़ा जिगरा चाहिए. वो आपको, हम हमेशा कहते हैं कि वो बेखौफ वाली बल्लेबाजी करनी होगी. देखना होगा कि इस मैच को कैसे जीत पाएंगे. ओवर टू शेलजार सर. It's going to be very simple. They need to be tested the temperament what they have. They need to play smart cricket. They cannot afford to waste wickets here. Up in the air. The third man region, just a single. Not a good start for this final over. Just got a single. 15 to win, and they are looking for boundaries. Omar quite capable of producing those lusty blows. Big man, can he clear the boundary? Couple of lusty blows will definitely. The game will be in the batting side. On the others, Farouk will be looking for dot balls. We got around the wicket. He is going to create that angle, which will be very tough for the right-hand batter if he can get one. Outswinger. Up in there. Who wants this? Easy catch. He's not going to miss that. Oh, has he missed? It was very, very easy. I never know it's under pressure. Zainu, what have you done? It was in his hand for few seconds, just juggled. And most importantly, it's allowed 2 runs for the batting team. 13 to win from 4. Chuma. Down the track, played towards the long off. He'll cut it off just for a single. So far, so good. 1, 2, and 1. 4 runs conceded. Talking about 3 deliveries and 12 to win. Couple of big sixes. He's looking for a boundary. The lefty, a flick of the wrist. He got the fielders there. He got deep square leg. A mid-wicket, full packed leg side for the left-hand batter. Is he going to target the mid-wicket? As expected, the captain and keepers is making sure that the fielders are on the right position. You have a backward point in the circle. It's no mid off, it's only long off. They don't mind singles. That's a good shot, but just not enough. Yes, that's enough. Just looked like he fielded. Couple of bounce, 2 fielders there. It's a boundary, and the timer, it's already over. You are exceeding the time limit per innings. Captain, please not, and umpire, exceeding the time limit.
That boundary will make them in a much more comfortable zone, but not enough. 8 runs from the last two. So we're going to witness an absolute thriller. It's just a matter of getting 2 boundaries. Can they get rid of it? It's all about the momentum, how they're going to carry on from here. 2 boundaries will seal the match for the batting team. It's going to be Sajir. The lefty got the much needed boundary in the last. In fact, 2 fielders were in deep square leg. In fact, deep mid wicket and 2 balls to go. 39 for 4 and 8 to win. 2 balls and 8 to win. Farooq conceded 8 so far. You need to defend 8 more runs. Here we go. All right on the block call. That's a game for them. It's never allowed the batter to freeze his arms. The leg by call by umpire. They don't mind read all these things. Just a matter of keeping the momentum. Now the fielding team would believe from now that they have a game in their hand. 1 ball left and 7 to win. They get 1-6. The scores will be level, Rauf. They'll share points if it becomes tie. It's not a knockout game. That means there is no super over. 2 points each per team if that gets into tie. If they get a 6 from the last over, at 7 to win from the last one delivery. Big man on chase. Omar, 6 from 5. Can he get a much needed? A big 6 would be targeting mid wicket. Here we go. Last ball. 6 to win. 7 to win. And that's a match. Just 2 more runs. Ran for the extra run, and the fielding team has done a tremendous job. It is not easy. Fly wing travels just managed to get 42. They were chasing a modest target of 47. That's a low scoring game. Well defended. You got to give credit to all the bowlers. Done a brilliant job, and captaincy was too good. None of the batters were able to produce that match-winning innings. It's all about the bowling. And if you have to announce the man of the match in this game, we'll come back to you on that. It should give the credit to the bowler who have done the job for the team, and they have sealed the victory. Over to you, Chirag. We'll move to the game number 3. We'll be back very, very soon. Thank you. थैंक यू सर. मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है. मैच नंबर 3 होगा और मैच नंबर 3 हमारे साथ अब थोड़ी देर में शुरू होगा. आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का और फैमिलीज का हम फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं. आप सभी का स्वागत है एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 के तीसरे दिन. और तीसरे दिन में थोड़ी देर के बाद हम तीसरे मुकाबले की ओर भी बढ़ने वाले हैं. तो ये तीसरा मुकाबला भी खास होगा और उस तीसरे मुकाबले के जो सारे अपडेट्स है वो आपको हम बताएंगे. आप कहीं ना जाए, देखते रहे, इंजॉय करते रहे ACL 3 सीजन 3 का ये भव्य दिव्य आयोजन. धन्यवाद.
शरीक है मैन ऑफ द मैच। जो पिछला मुकाबला हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच शरीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए आए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड वहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन हम चलेंगे एक मुकाबले की ओर जहाँ पे ये हमारे सारे जो दर्शक यहाँ पे आए हैं उन सभी का हम प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ कैमरामैन मनीष निजाई, जन्मेश मेहर, एडिटर कुणाल पागदरे, मैं चिराग मेहर, आप सभी का स्वागत करते हैं। उसी के साथ हमारे डिजिटल स्कोरर रॉब भाई जो दोनों काम कर रहे हैं एज अ कमिटी मेंबर और यहाँ पे एज अ स्कोरर, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सारे जो शिजी मोहन भाई, रोब भाई, विजेश भाई, बिलाल भाई, रश्मि भाई, सफान भाई, विकी, कासिम, बीनू, शिजू, हरिराम हरिराम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हरिराम की बात करें तो हरिराम जिस प्रकार से इस पूरे ग्राउंड को मेंटेन करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, हरिराम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप है तो फिर इस ग्राउंड को सजाना इतना आसान हो जाता है। और पूरे ग्राउंड की पूरी तरह से जो काम करते हैं उसके लिए मैं हरिराम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच हरिराम, कीप गोइंग। आप ऐसे ही मेहनत करते रहे इस ग्राउंड पे, और इस एम एस धोनी क्रिकेट एकेडमी के इस ग्राउंड पे मज़ा तो सभी को आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड एसीएल 3 के चेयरमैन निजामुद्दीन सर इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड को वहां पे प्रदान करेंगे। शारिक है मैन ऑफ द मैच, और निजामुद्दीन सर वहां पे वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंट करने वाले हैं। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो सारे विजन्स। शारिक वहां पे और निजामुद्दीन सर वहां पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो वहां पे एसीएल कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो हमारे साथ तो लगातार पहले दिन से जुड़ रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रॉब तो हमारे साथ जुड़े हैं, जयसल भाई हैं, उसी के साथ रमजी एंड रियाज, इनका नाम नहीं लिया था, इनका नाम लेना भी ज़रूरी है। तो यस, ये आप सारे विजन देख सकते हो जहाँ पे निजामुद्दीन सर मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। रमजी भाई वहाँ पे है, जयसल भाई वहाँ पे है। जो सामने कैमरा के सामने ना थोड़ा सा उन्हें दूर करे, जयसल भाई थोड़ा सा वो कैमरे के सामने ये विजन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करें। कैमरे के सामने ये जो पब्लिक है वहाँ से हटाए पूरा, ये पूरा आपके पीछे जो पब्लिक है आपके आपके आपकी ये वाली है, यस थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर रखें, क्योंकि बहुत सारे हम कहते हैं कि विजन क्लियर होने चाहिए। मैन ऑफ द मैच शरीक, वेल बॉल, 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, ये इनका एनालिसिस था। और ये मैन ऑफ द मैच के बहुत सारे हम देख रहे हैं कि वो प्राइजेस आपको मिल रहे हैं। और हमारे दोनों अंपायर फिर से रेडी होंगे, हम भी रेडी है, आप भी रेडी हो जाए, क्योंकि अब ये तीसरा मुकाबला अब आपके सामने आने के लिए तैयार है। तो वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है फिर से। ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड, ये देखिए ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। उसी के बाजू में आप अगर उनके राइट हैंड साइड पे देखोगे, ये बाइक्स जो मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन की ये बाइक्स है, ये भी थोड़ा सा सबको अपने और खींच रहे हैं। लेकिन ये बाइक्स किसके पास जाएंगे? निजामुद्दीन सर वहाँ पे ये वो बाइक्स को देख रहे हैं। ये सारे ये देखिए ये फोटो सेशन, ये भी बहुत खास होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, कि भाई वो आज जाए अपने घर पे जाए और फिर वो फोटो सेशन देखे।
यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट वर्सेस मरबूक QICC के बीच ये मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट पहले बल्लेबाजी करेगा और मरबूक QICC पहले फील्डिंग करने वाली है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज जा पहुंचे, अंपायर भी जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद इन एक्शन आपके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं इस तीसरे मुकाबले में, जहां पे तीसरा मुकाबला खेला जाएगा यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट वर्सेस मरबूक QICC के बीच। और अब बज रहे 10:09। अभी भी दो मुकाबले आने बाकी है इस रात के। दो मुकाबले खत्म हो चुके हैं और आखिरी दो मुकाबले अभी भी आने बाकी है। कल से फिर से हम जो टीमें पहले दिन से खेली थी, पहले दिन, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन, उन सभी को फिर से हम रिवाइज होते देखेंगे, क्योंकि कल से सेकंड राउंड शुरू होने वाले हैं। तो सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाए, उसके लिए भी आप तैयार हो जाना, क्योंकि बहुत सारे मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं इन एक्शन। ACL दोहा कतार जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर आपको लाइव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्री लाइव वीडियोज पे भी आपको ये सारे जो लाइव एक्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हो चुके हैं। तो आज का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने तैयार होने जा रहा है। तीसरे मुकाबले में जहाँ पे यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, वहाँ से बल्लेबाजों की भी बात करेंगे। वो कौन से बल्लेबाज है जो इस मुकाबले में खेलने के लिए तैयार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस गेंदबाज के हाथ में गेंद है ये देखना होगा। लेकिन ये दोनों टीम आज पहला मुकाबला खेल रही है, तो पहले मुकाबले में इनका स्वागत करेंगे। ज्ञान पांडे पहला ओवर लेके, यस ज्ञान। और स्ट्राइक की बात करें, सहद और मंसूर, ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर है। सहद, ये सहद स्ट्राइक पे रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो उनके सामने है गेंदबाजी के लिए ज्ञान पांडे। ज्ञान पहली गेंद लेके, पहली गेंद जिस प्रकार से ये गिरे है, लेकिन गेंद क्या बल्ले पे लगी है? यस, अंपायर कहते हुए इस लेग बाय, बल्लेबाज कह रहे बैट से लगी थी। एक रन यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। टीम यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट वर्सेस मरबूक QICC के बीच ये मुकाबला शुरू हो चुका है और दोनों ही टीम यहाँ पे तैयार है, हम तैयार है। और इस तीसरे मुकाबले में ये जहाँ पे यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट कितने रन बनाएगी ये देखना होगा। सामने गेंदबाजी के लिए ज्ञान और सामने होंगे बल्लेबाज अब मंसूर और ज्ञान आमने सामने। इस बार गेंद को आने दिया, बहुत टाइम था बल्लेबाज के दाम। कितना हो सकता है? डायरेक्ट हिट अगर होता तो बल्लेबाज को जल्दी लौटना पड़ता पवेलियन, क्योंकि ये काफी नजदीकी मामला था। डायरेक्ट हिट फर्नीचर को डैमेज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले हैं, दोनों ने अपना खाता खोला है। स्कोर अब तक का 2 रन। ओवर नंबर पहला, गेंदबाजी के लिए ज्ञान और उनके सामने सहद। ज्ञान पांडे, अब पांडे जी किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी करते हुए। इस बार ये मुझे ऋषभ पंत की याद दिलाते हुए 4 रन चौका। जिस प्रकार से गेंद थी उसी प्रकार से गेंद को खेला, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को घसीटा और ऑन साइड पे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आता हुआ ये पहला इस इनिंग का चौका। 4 रन। स्कोर 6। यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट के बल्लेबाजों ने यम्मी शुरुआत कर दी है। अगली गेंद, इस बार छक्के के बाद क्या ये चौके के बाद छक्का, ये है मजा। यही तो इस टूर्नामेंट की खासियत है। यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट ने ये शुरुआत देखी है, बहुत ही अच्छी की है। पहले दोनों बल्लेबाज सिंगल से अपने खाता खोला, फिर तीसरी गेंद पे चौका आया, चौथी गेंद पे सिक्सर आया। स्कोर मूव्स ऑन 12। 12 रन। इस टूर्नामेंट की हम अगर दास्तां लिखे तो इतने बड़े स्कोर नहीं हो रहे, लेकिन इस मुकाबले में शुरुआत देखिए, पहले 4 गेंदों में 12 रन। इस बार ये क्या खराब गेंद है, क्या रन देके जाएगी ये? 4 रन चौका। 16 ऑन बोर्ड, 16 रन।
बाहर किनारा और किसी का ना सहारा। ये गेंद और ये कैच हो सकता था अगर कैच लेते कीपर। 4 रन, चौका मिलेगा। 16 ऑन बोर्ड, 16 रन। ज्ञान पांडे, पांडे जी के ऊपर आक्रमण। 408053, ये गाड़ी थोड़ा सा ट्रैफिक कर रही है। एफजेड क्रूज, प्लीज थोड़ा सा वहां से हटाए। फिर से लोअर फुल टॉस, फील्डर वहां पे मौजूद है। इस बार 1 रन, लेकिन सामने वाली टीम के लिए एक खतरा बन चुके हैं। सहत, क्या बल्लेबाजी की है। 15 रन पे खेल रहे हैं और 5 गेंदें इन्होंने खेली है। एक अगर गेंद देखें तो खेली है मंसूर ने। अब तक का स्कोर 17-17 और एक मिस्टर एक्स्ट्रा जो हमने एक देखा था। अब तक का स्कोर 17-17 रन। एक ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेलजार भाई है, आपका भी स्वागत है शेलजार भाई। लेकिन ये जो शुरुआत है ये काफ़ी बड़ी शुरुआत है और यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट ने यम्मी यम्मी शुरुआत की है, ऐसा बोलना होगा शेलजार भाई। धन्यवाद शिराग जी, एज यू राइटली मेंशन यमी यमी शुरुआत किया है उसने। 15 plus 2, 17 already from the first over. Mansoor was just watching from the non-strikers and all damage has been done by Sahat. 15 from 5, 2 boundaries and a massive 6. Move to a good start, a kind of start they needed to play the 6 overs match. Some very good players in the opposition team. Sajir is an experienced campaigner. He knows how to control the shorter format as one who is guiding, is marshalling the troop and fielding positions. It's been controlled by Sajir. Two strong teams, Yummy Taste Restaurant and Mabu QYCC. Sahat, the brilliant start is going to face Nomi Afridi. As Noemi Afridi, a Pakistan pace bowler, is up against the Indian left-hander. It's going to be very interesting how he's going to bowl. He's very quick, he's very tall, he can create that angle which will trouble the batter. It's a good contest between the bat and ball. Saad was looking good in the first over. Afridi, right arm over the wicket. Oh, swing and a miss. It's swinging away from the left-hand batter. As expected this man to charge in and create that angle. Will be very tough to read his line length. A pace bowler charging in. Man who got a solid start. Another one goes away from the left-hand batter. That's the kind of angle he can create. You can expect this kind of dot deliveries from a pace bowler. That's one of the big assets in your team. It's Nomi Afridi. This time wanted to bowl. Looks like an edge and no signal from the umpire. It's his leg byes on to his pad. The first 3 deliveries right on the money. None and a leg by. So far so good from Afridi. And Yummy Taste Restaurant moved to 18 for none from 1.3 overs. It's all happening here in Absolute Sports Ground. The day number 3 of Asian Cricket League Season 3. 24 franchises. It's a long tournament. It's too early, it's pace off. It's very smart operator. The last 2 matches, it was 35 and 40 plus 2 low scoring game.
The first one was easily chased down without losing wickets. Victoria travels. I'll have to wait and see what is the kind of score they would be looking for. This time he pulled away in style, straight to the man as he dropped. No. Yes, he got it final. Bit of juggle and as expected, he had to go for the shot. First four deliveries was not considered anything and he had to go for the shot. Pulled away, but just not enough timing on this occasion. The lefty have to return on this occasion. After a shot, little innings comes to an end. Got the big breakthrough. Mabuku by SEC. And Afridi produced the much needed breakthrough for the team. A move to 19 for 1, Yamite's restaurant after a brilliant start. 2 boundaries and a massive 6 and is back in the dugout. Well done, buddy. And Afridi produced the breakthrough. With some solid players in the fielding side. It was an auction of more than 900 players for Asian Cricket League Season 3 as one of the biggest tournament in the country, as setting up a real high standard in terms of giving the rewards to the players. As you can see, 3 sports bikes have been displayed here. 3 individuals going to be the man of the series, best batter and best bowler. During the grand finale of this tournament, was going to have touch and feel of this bike. 3 bikes. It's a new man, Hussain. Good shot. A long off, tough job, but still managed to stop the ball in time. And a good throw towards the keepers and 2 runs conceded. As Hussain, after the completion of 19 for 1. Yamite's restaurant got into a fly, then lost a wicket of the lefties. Saad is back in the dugout and Hussain joined there in the middle. Afridi creating the damage. Sajid is having a word with his bowler. Jersey number 4 is into the attack. We've got Minikas. Very experienced campaigner. He's played plenty of tournaments in this ground. Qatar Foundation, absolute sports ground in Ran, Qatar. One of the finest, prestigious cricket ground. And witnessing the day number 3 of Asian Cricket League brought by Premier Techno Media, well supported by title sponsor Just Asanota. Here we go. Right in the block hole, finds the fielder and shot fine leg. So talking about the total from the last 2 games, 35, and the second match the target was 47. Now Yamite's restaurant got into a fly, but they got a big wicket. The fielding team now, it's all up to these 2 guys out there in the middle to try and make a partnership. Two for 1. Leg side has to be wide. Another extra. Nikas into the bowling. Conceded 2 runs, including the wide. Afridi 1 over, 2 runs and a wicket. That's a lawful toss. Played really well. There is protection deep at wicket. Chance for a second. They're satisfied with a single.
Moving on. Another lawful toss. And finds a fielder again. Bit of fumble there. This time they ran for the second. This quite easily. These are the extra run. They need to convert those 1s into 2s. The running between the wickets has been good. We saw an absolute thriller in the last game. 2 boundaries required in the last 2 balls, but the bowler just delivered the perfect delivery. 1 dot. Defended a target of 47 the last game. Another one right on the money. Tried to go for it, sweep. As Chirag was mentioning earlier, looks like a Rishabh Pant kind of shot. Diving and attacking towards the fine leg. This time he got a better connection. Midfield will cut it off. 27 from 2.5. Yummy Taste Restaurant, in spite of getting a good start, got to give credit to the bowlers. Kept the score flow very low after this. Because 1 to go. Up in the air. He's got the height, but not the distance. Safe pair of hands, not going to make any mistake. Deep mid wicket. Ismat making no mistake. Another man dismissed. 27 for 2. Yummy Taste Restaurant after the completion of 3 overs as a strategic timeout. We'll be back very, very soon. 2 minutes. So once again, a big thanks goes to our title sponsor, Just Us and Auto. And supported by all our sponsors, Red Apple Events and Media, Sixer, providing the playing balls, Al Noor Trading, DY Sports, Food Art Restaurant, Gift Shop, Symphony, Events and Productions, one of the best in the country. A Plus Contracting, Gulf Plan Trading and Contracting, Icon Trading Center, Center for Education and Training, Creative Edge, PK Cargo, Relocation Services, Eco Fresh, Wada Trading, Ibad Sports, Tandura King Restaurant, Printech Solution Digital Print Partner, Mabu Contracting Company, Absolute Sports Venue Partner, Calicut Rahmat, Pranav Sports and ID Optics. Thanks to all the sponsors for bringing this cricket tournament very, very success. The 3rd day is progressing here, Asian Cricket League, right here in Absolute Sports Ground. During the game number 3, progressing with the first innings. Yummy Taste Restaurant taking on Mabu QYCC. From the first 3 overs, they got 27 runs after losing 2 wickets. Sarup and Mansoor on the crease. Will be as expected, the captain to bring his strongest weapon. It's Noimi Afridi. It's just considered 2 runs. Got a wicket. Here is into the attack. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. Umpire is taking his own time. Was there any edge? They were appealing for caught behind. It's pretty much again is good bowling continues here. It's a good captaincy. It's bringing his main bowler. Is attacking in spite of getting a good start. Running short of runs now. Yummy Taste Restaurant. Here we go. Afridi to Mansoor. Another one. Almost same length and line. Batters is not able to read his line and length. As brilliant bowling performance continues. None, 2 dots. 1.2 considered 2 runs and a wicket. This ball number 3. That's a full toss. Has he got? Yes, he has. Brilliant hitting. This is what happens when you lose the control. He has done 2 brilliant deliveries, but third one, fortunately,
It was a full toss, and the batter said thank you so much. Mansoor has received it just like a gift and deposited towards the mid wicket. As in the reverse sweep. What a turnaround in this game. 0-0-6. This time pays off and good collection behind the stump. Keeper doing the rest as a good comeback by Afridi. Maybe lost his control in the last 30 minutes. What a good comeback. 33 for 2 after 3.4 overs. We are in the 4th over. As he got to reload this one. It's a very interesting bowling figure in this over. 0-0-6-0. Down the track he comes, chance for a catch, beaten the man in deep backward point, racing towards the boundary. He wanted to smash that towards the mid wicket, getting an edge, but plenty of pace involved. And that's exactly the reason ball is cruising towards that deep backward point for a boundary. A welcome boundary for the batting team. Yummy Taste Restaurant will take it. 37 for 2, 1 ball to go. 10 runs conceded from this over. The last 6 was an absolute full toss, and this one, back of the length. Mansoor looking good, 15 from 11. Oh, again going to fourth. Reverse sweep and stealing a single and retain the strike for the next over. Leg by call by umpire after the completion of the first 4 overs. Yummy Taste moves to 38 for 2. 2 more overs to complete. The first match was 35, then 47. Now we are 38 now. 2 overs can easily get into 60s. That's quite possible. Mansoor batting really well. And that bowler has conceded 11 runs. In the first over, he had only 2 runs and a wicket. Noima Afridi completed his quota of 2 overs. As the star of the day. Reward also for the very first time in a cricket tournament. Be rewarded for your best performance. The 4 matches. The Premier Techno Media has done a tremendous job. Rattle the stump. That is what it happens. Is into the right hand batter. Izhar comes and he concurs. First ball. Looks like another Pakistani bowler into the attack. Izhar. After Afridi, Sajir brings another big weapon. And he got very first ball banged on the stump. 38 for 3 is how they started this innings. 15 plus 2, 17 runs coming. And the first over. Since then, it's all about the bowling. The bowling team really came back strongly. 38 for 3. Looking for 2 batters now. Aslam joined there in the middle. Swaroop has to face this first ball. And Mabu QYCC has done a good job. Oh, this man is hard. Very strong. Slow run up, but plenty of pace. To Aslam. Now I got a deep backward point. They move the man to the deep extra cover. Now for the right hand batter. The backward point comes inside the circle. That's a good move. Oh, shot! What a good shot! First ball he's facing, says thank you so much. It was in the slot for sure. Still he had to deposit, drifting slightly onto his pad. That's a big 6, massive one. Aslam. That has to be a wide or a no, boys. A wide has been called. That's what happens when you're punished very first ball towards the mid wicket for a big 6.
Much better connection. Tough one for the fielder. Very tough one. Long off region this time. One which goes to the mid-wicket. Now, this is good batting. He's playing with real good cricket here. It's all about the momentum. It's straight away shifted towards the batting. It was Afridi created the breakthrough. Izhar comes and taken a big wicket. Now after that, Aslam comes and gets those big shots. One massive six and a boundary. He is on a roll here. And moves to 49 from 4.3, 1 run short of team 50. And this is going to be the first 50 of day number 3. The third game, the first innings. This time it's a much better length and not able to get right in the middle of the bat and still managed to go for a couple of more runs. Team 50 for Yummy Taste Restaurant from 4.4 overs. Brilliant. You got to give credit to this man, Aslam. All of a sudden the momentum has been shifted towards the batting team. And Swaroop is just watching him from the non-strikers end. What a good batting. Aslam 3 deliveries and 12 runs already. Yummy Taste moved to 51. They got one more over after this. The pass score in this ground is around 60-65. That's a very good length. That's a very good length. Right on the money. It's a good comeback. This is what he has been trying to do. Nip back into the right-hand batter. That's a much needed dot. Started off with a wicket. Went for a 6. A wide, a boundary. 2 runs. Another one. Very similar to the one which he bowled earlier. That's how you complete this over. In spite of getting those 1 boundary and a 6. That's a good note to finish this over. 13 runs conceded. Yummy Taste Restaurant moved to 51 for 3 after the completion of 5 overs. And 7 minutes, 36 seconds left. This is got to make it fast between the overs, guys. That's going to be very interesting how they are going to deal with the last 6 deliveries. If they can manage to get 10 to 15 runs in the last over, they're pretty much in the driving seat. It'll be tough for the batting team to come and chase this down. But you got very strong batters in the lineup. Sajir, Jason, number 17, is one of the batters who's definitely going to walk in as a frontline batter. I wouldn't be surprised if he goes to open the innings. Very strong on both sides. An experienced cricketer in Qatar, Sajir. He has to play a big role in this game. And to bowl the last over. Shabaz. Oh, that's a good one. Very good on. Right on the money. Shabaz with the dot ball to start. Saroop is placing his first ball. Now, definitely, he is going to have a word with Saroop. Aslam, come on, give me a single. That's the best thing he can do. He is the one who's striking more than 200 at this moment. 12 from 5, a massive 6 and a boundary. He needs to be on a strike. Edge and just go for the single. There's nothing else you can do. Just go for the single. Bring the man who is in form. He needs to face the last 4 deliveries. 52. 1 or 2 boundaries from Aslam. Yummy Taste would have a very good run. They are looking forward for a couple of lusty blows. He's already got a boundary and a 6. Shabaz need to be very careful this line and length here. That's what happens. It's too early for the shot. It was a very good decision from the captain to bring Shabaz, not so much pace, but a very good line and length.
It's 52. 3 to go. This time he connects. Smashed toward the long off. And just a single. That was not a great throw. Allowed the batter to go for another run. In fact, they ran for 3 runs. Good running. Very good running between the wickets. And these are the very crucial runs. Trust me now. It's not only about the boundaries and sixes running between wickets. As soon as he saw a misfield, a throw was never done. 55, 2 to go. Swaroop to face the last 2 deliveries has got the perfect man on the downstrikers end. Aslam. The last ball conceded 3 runs. 4 so far. Yet to face another 2 deliveries. Swaroop, what he can do. Trying to go for a reverse sweep and he can just run and watch him. Aslam will have to play a big shot now. 55 plus 156. Pass score in this ground is around 6 if it managed to get a boundary. 1 ball away. Then almost all the fielders in the boundary. Here we go. So pace off. Brilliant work done in the last ball. I knew what exactly was his clever bowling. Not conceded any runs under the circumstance. It's a very, very good over. Just conceded 5 runs and Yummy Taste moved to 457 from the allotted 6 overs. And Mabu QYCC need 58 runs to win. Going to be very interesting how they're going to go about the chase. The first 2 matches was easily chased down. A target of 35 in the first game and 47 in the second game. Now the third we have a much better score here. It's all happening here in Absolute Sports Ground. 57. Yummy Taste runs very, very well. They've got to give credit to the man who striked more than 250 for Aslam. Was the key batter in the side. They were just helpless in the last over. Some very good bowling. Shabazz done the job for his team. Not conceded a single boundary in the final over. That's what exactly you finished the innings. We'll be back very, very soon. 2 minutes away. And I request 2 captains for the next match. Kindly be here for the toss. Target Killers captain and Mitsubishi Motors Stallions. Mitsubishi Motors Stallions. You can't find a better name this Jaisal. Can we make just a Mitsubishi? It's a brand. It's a good marketing for them. Or we should call them Stallions. Stallions captain, please come for the toss. We're back very soon after the short break with the chase.
Can we have the two captains of both teams for the next match? Mitsubishi Motors Stallions and Target Killers. Please come here, guys, for the toss. Mitsubishi Motors Stallions, Captain Pranav. I am expecting a very good contest. One of the best cricketer in Qatar, Pranav, is leading the team. Mitsubishi Motors Stallions up against Target Killers. Can't wait for that. That's going to be the day last match. Now the day 3, third match in progress. We're moving to the second innings. Can we make it fast, guys? Can we have the opening batters from Mabu QYCC? The target has been set. 58 runs to win from 6 overs. 2 umpires controlling has done a tremendous job so far. Mr. Mansoor and Mr. Niaz alongside with the one and only Mr. Rauf, international official scorer. And that's how it brings a good smile on his face. As when we move to the second innings, it's a big thanks and kudos goes to the entire team of Premier Techno Media under the leadership of Mr. Jaisal and his boys, Ramzi, Mr. Jaisal and all the teammates have done a tremendous job in times of getting a real world-class facilities right here in Absolute Sports Ground. When you're talking about the rewards, you got 3 sports bikes for 3 individuals towards the end of this tournament, which is a massive rewards for 3 person who was going to be the man of the series and best batter and best bowler. It's all coming on your way during the grand finale. Don't miss a very colorful closing ceremony right here in Absolute Sports Ground. Can we make it fast, umpires, for the chase? Yummy Taste Restaurant Impact player in Naufal, and the player we got at Faslan. Yes, let's move on, guys. It's 58 to win. From 6 overs, man in yellow got to defend this 58 from 36 deliveries. And to open the innings, from the batting team is Mabu QYCC has been sent as one of the top order batters, Esmat, alongside with him Farouz. It's going to be the key. Farouz, very strong batter up in the order. Very strong on both sides. His plays all different formats. Talking about 6 overs, 20 overs, even 50 overs. Yes, Farouz, good luck for this game. And a very favorite cricketer. He got a left-hand partner, Esmat. So this left-hand, right-hand combination will have to get into a flyer to chase the target of 58 from 6 overs and to bowl from the pavilion end, Hussain. Right arm over the wicket. Here we go. Chase. Straight away. Full toss. Chance for the double.
Settling down for a single after Mark and Stalos and brings back Fairuz. This is going to be interesting how he's going to go ahead with this game. As his first game of this tournament, plays for Marble QYCC. At 900 players in Qatar and 24 franchises are playing in this big tournament. It's one of the best, the biggest. 13 days, day number 3. Perfect weather continues in Qatar as less than 24 degrees Celsius. In terms of the number of teams, this is how you have to mark. Straight to deep square leg and gets into the action with the first single, 2 from 2. The target is 58. Sign. The opening bowler looking for early wickets and the left and right hand combination for Marvel QYCC. It's a good looking shot, but he finds the fielder deep mid wicket. For the left-hander batsman, there's a packed leg side fielder. So a deep mid wicket, a deep square leg. Fine leg is inside the circle. They move to Faroes. I'll have change in the field as expected. A backward point covers mid off, mid on inside the circle. Got mid wicket. They're trying to go for a reverse sweep as rightly umpire says it's a fair delivery. That is because maybe he moved across the crease. Farouz is very strong on both sides. Needs to play his natural game here. Edge and maybe missed. 2 yards from the keeper's gloves. One of the very strong point of Farouz is even if he's playing a tennis ball, you can expect those classical cover drives. You can expect the ball to cover a distance and this is on long off region. Right on the block hole. Has been a very decent over. 1-1-1-0-1-0. That's a good comes to an end. 4 overs, 4 runs conceded from the first over. Mabu has a quiet start, just 4 runs. And the record run rate will be more than 10. They are targeting around 58 from the remaining 30 deliveries. You need to score at least 2 boundaries. Have 2 very good batters up in the order. Maninello, I need to create some breakthrough. Yummy Taste Restaurant had a brilliant start. The very first over conceded more than 15 runs. Since then it was a pause for the run flow. Afridi comes and takes a wicket. That was really good. The way they came back, and when he came to the second over, he conceded too many runs. This has been the story so far. And Manzoor into the attack. As well, let's move on. It's 10:53 p.m. We got one more game to be completed tonight. Around the wicket. Manzoor was good with the bat. Now, can he repeat the same performance with the ball? He's bowling to one of the best in the business. Farouz had a quiet start in the first over. Now has moved to the second one.
54 from 30. That's the equation. It's going to be interesting if they can chase down. This is what he was talking about. Fuller length, driven straight to the long off. Powerful striker of the cricket ball. He was talking about the tennis ball, but it's too good. A lot of fans around for Fairuz. Let's make it fast, guys. And after the power play, the fielders has been spread across the boundary line. Long on, long off. That's a big shot. Has he got enough? I reckon he has. It's above the LED screen. It was clean, swept, and beautifully executed. A magnificent six as a first of this innings. I need plenty of that. Maybe slightly missed on this line in this occasion, bowler. And the batter say thank you so much. An absolute gift and punished in style over the mid wicket. A massive six. Azmat, 8 from 4. Round the wicket. Pulled away. Beautifully executed again. Had a jump from the field and deep mid wicket. Just not able to catch it. Another six. If you look at the screen there, you can see how he pulled that in style. There's nothing wrong with the delivery. It's taken from the offside and pulled in style. And covered a lot of distance in spite of having a tall man there in deep mid wicket. Still managed to cover the boundary. It's cleared the boundary in style. After having a quiet over, now all of a sudden 17 for Nolos. Mahbub Quwaisis, got to give credit to this man. Ismat 14 from 5. 2 massive sixes. Hey, it's got to smash around this ground. Here we go. Third. This time much better length. He had to reach for that. Just managed to get a single. It's good to go. As rotating the strikes brings back Fairuz into the crease. One, 6, 6, 1. Got 2 legal derivatives left. Already 14 conceded in this over. Oh, catches the call. Easy one. Is not going to miss. Oh, has he missed? Maybe judged little late. And Fairuz survives. It was the kind of easy catch. He should have judged little more early and would have been a big, big wicket. Fairuz not able to get right in the middle of the bat, the back of the length delivery. Just managed to get a leading edge and luckily it survives. 19 on the board and 1 ball to go to complete this over. Mansoor conceded already 15. Driven nicely. Through the covers, through the gap and 2 fielders. Brilliant work has been done. The boundary line, it's the longest region, longest area in this ground. I need to get it was an absolutely brilliantly executed cover drive. Move to 21 after a very quiet over. 17 runs coming from this one. It's an expensive one. They need to go. They needed to change the gear from the second over. That's exactly Ismat and Fairuz have done. 21 and 37 more runs to win from the remaining 24. So once again, you know that there is a star of the day after the 4 games. Every day it will be rewarded towards the end of every day. So you got to be the best performer to get that reward. And during the closing ceremony, if you are the one who's got the highest individual score, you are the top batter, you're a good batter, you will be getting a biggest reward you can ever imagine.
Shafiq into the attack. Another very experienced bowler. Can he break through this partnership? Good length. Very good line and length. Offside is the key. Not enough pace on this occasion. Just Fairuz looks like he's struggling to middle it. So a couple of drives and yet to find his first boundary. Once he's in touch and he is going to punish almost all the deliveries. It's quite capable batter. Here we go. Another edge. Not a convincing shot again from Fairuz. Fairuz, where is your bat? So got to get his bat back. Trying to attempt a drive, getting an edge. Let's have a look at the required run rate. It's going to be more than 10 years. 36 from 22. And Smith has taken the control of this inning so far. Fairuz 5 from 7 and Smith 17 from 7. He is the one who set the tone. 2 massive sixes. He is facing around the wicket, Shafiq. Very well done. Right on the money now. Got a chance to go for a run. No. This is what happens. Yes, they are facing one of the very strong bowler. Clever. Very clever operator. Not allowing to freeze his arms. And Smith have hit a couple of big sixes now. Is looking forward for that half volley. And a good length. Look at that again. He has been playing well, Rauf, but this time played across the line. Across the line, the ball is swinging away from the left-hand batter, and he wanted to play the shot across the line. You can expect him to go more far from the outside of stump now. Now this is what he had. Edge and third man in position. Cut it off and then inside the circle. This time is a much better attempt. That's what you can see on his face. The last ball, he tried to go for across the line. He's been playing really well. Lefties. Can Fairuz do something different? Couple of shots misjudged. Has not in full flow. And after this, a strategic timeout. Another one catches the goal. Tough one for the keeper. Beaten everyone there. Racing towards the boundary. Has he got the one which needed very badly for Fairuz, and eventually getting to the boundary to end this over. And we have the strategic timeout, and they'll have a lot of things to talk about from the last 3 overs. What has actually happened? And Fairuz, I wouldn't be surprised if he changes bat. We'll be back very, very soon after 2 minutes.
As you're back in the game, and we're back to the name, which is very longest name in this tournament, Mitsubishi Motors Stallions. Thank you so much, Mr. Rahul, for discovering the longest name for a cricket team. Have you got another name which is a little more longer? Going back to this game after the timeout. Fairuz fans are still waiting for what he has in the second half. The first half was very quiet for Fairuz. A lot of his friends and fans are waiting for at least 2 boundaries and a 6. You can expect few people to go away from this ground as soon as he gets out. We always say the commentator's curse. So Fairuz, stay back. Your fans are waiting for you to play some glorious shots. Let's get into the second half of this innings. It's all about 2 sixes he got. Ismat charging in. A pace bowler comes. Resin. Good length. Very good length and equally well played. It picked up the length so early. That's good collection behind the stump keeper. Now this is going to be interesting. Fairuz had 1 bottle of water. He had a quiet first session. He will be back as a kind of player who can change the game at any point of time. Strategic timeout. Fans are waiting. You expect those glorious cover drives. He got a packed offside fielding for Fairuz. Deep extra cover. Long off. And deep backward point. Not again. Another edge. As the third time. The pressure is mounting here for the batting team. They need to go for big shots. The required run rate is more than 12. Ismat need to play his natural game. Is up against one of the very good pace bowler. Resin. He's got a charge in. He's got a long run up. He's running for almost from the 30-yard circle. Good connection. Very good connection. Straight to the man. And just a single. This is brilliant piece of fielding. Fairuz back in the crease. It's all about the temperament, how he's going to deal with this situation. They haven't lost any wickets. 34 no loss. 28 to win from 15. A bit of... Oh, no, yes, and finally, as Ismat says, still Fairuz struggling to get the timing. If you look at Fairuz, it's 11 from 10, just 1 boundary which came in just before the strategic timeout towards the third man region. And Ismat, 2 sixes. They haven't lost any wicket, but 27 from 14 is quite gettable. They can really go for big shot. They got freedom to hit. Not again a convincing shot. Fielders are there in the leg side for the left-hand batter. Ismat will just get a single. 26 from 13. Still waiting for 1 boundary. Another one. A convincing one from Fairuz. 11 from 10. Got plenty of batters in the dugout. Sajir is waiting. This time he connects, but not. Good running. Very good running. Yes, he has reached on time. And score like umpire says, yes, it is. Get a little more confidence now with those
2 more runs added to the total. 34 for Nolos after the completion of the first 4. 12 deliveries left and 24 runs to win. It's almost getting into the situation where we had in the game number 3, Rauf, where they needed 24 from 12. Ended up in 2 boundaries needed from the last 2. What do you reckon? It's going to be the same situation here. Almost looks like same. At this time, I would like to invite our Hindi commentator, Mr. Chirag, onto the com box. Has been quiet for some time. Chirag, क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़ा मैच हो रहा है. अभी तो फिलहाल चाहिए 24 रन, लेकिन हमारे पास बस 12 गेंद बाकी है. सर ये क्रिकेट है. हम हमेशा कहते हैं कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जान डालने के लिए दोनों बल्लेबाज तैयार है. खास करके अगर बात की जाए इसमत जिस प्रकार से 13 गेंद में 21 पे खेल रहे हैं, फेरूज की बात करें 11 में 13, तो ये दो बल्लेबाज है जो मुकाबले को ख़त्म कर सकते हैं. तो मुकाबला अभी भी मैं कहूँगा कि ऑन है. इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है. शफीक अब गेंदबाजी खिलाएंगे, जिन्होंने पहले ओवर में 6 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं, और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार होंगे. इसमत के लिए देखना किस प्रकार से स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि रनों की बात की जाए तो रनों की भूख बढ़ने वाली है बल्लेबाजों की, क्योंकि 12 गेंदों में 24 की जरूरत है. कुछ अलग इनका स्टाइल है. गेंद ऊपर है हवा में, फील्डर क्या खुद कीपर आएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेफ हैंड है. इनके हाथ जो ग्लव्स है, सहद ने कोई गलती नहीं की और ये विकेट आता हुआ. इसमत की बात की जाए तो अच्छा खेल रहे थे इसत तो, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहा, गेंद को पढ़ नहीं पाया और विकेट आता हुआ. अब ये दूसरा विकेट आया है. अब जो इक्वेशन है 11 में 23 24, 11 गेंद 24 रन, इसका मतलब है मेरे हिसाब से आपको यहाँ से जो विकेट की तलाश थी खास करके बॉलिंग करने वाली टीम को, उन्होंने वो हासिल कर ली है. अभी भी 11 में 24 है. मेरे हिसाब से अभी भी अगर 1-2 बड़े स्ट्रोक आएंगे तो मैच में मज़ा आएगा. अगर यहाँ से विकेट आती है तो फिर फील्डिंग करने वाली टीम यहाँ पे कुछ अलग करेगी. द न्यू मैन इन बुद्धिका का एक हम कहे एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, और जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़े स्ट्रोक में काफ़ी विश्वास रखते हैं. 11 गेंदे 24 रन, मुकाबला नंबर 3. ये मुझे लगता है बहुत दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद ऐसे मुकाबले देखने को मिले जहाँ पे चेस करने के लिए टीम उतरी है और वो वहाँ पे अच्छा काम कर रही है. मैं यही नहीं कहूँगा कि वन साइड मुकाबला है, यहाँ पे संघर्ष हो रहा है और संघर्ष देखने में मजा आता है. गेंदबाज तैयार. शफीक, पहला ओवर तो काफी अच्छा घटा था, दूसरी ओवर की पहली गेंद पे विकेट. ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, कोई गलती नहीं, सिंगल. स्ट्राइक यहाँ पे जरूर बदलेगा. फैरूज अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे. 11 गेंदे 24 चाहिए थे, अब 10 गेंदों में 23 की जरूरत है. आप देख रहे हैं प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला. ये सब कुछ आज हो रहा है, घट रहा है. तीसरा दिन है, तीसरा सीजन है और तीसरा मुकाबला है. 3 का जादू. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ है भाई, फिर से कोई गलती नहीं विकेट कीपर की. 20 ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को सर बैक टू द पवेलियन भेजा. इसका मतलब है गेंदबाजों ने मेला लूटा है, गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को आउट ग्राउंड के बाहर भेजा है. और जिस प्रकार से ये गेंदें थी, शॉर्ट बॉल करने की ताकत रखते हैं, गेंद को थोड़ा पीछे खींचा, बल्लेबाज को कहा कि भाई आप में ताकत है, तो दिखाई है और बड़े स्ट्रोक खेले. अब इक्वेशन बदलता हुआ आने वाली 9 गेंदें, और अब जीतने के लिए अभी भी इस मुकाबले को 23 की जरूरत है. मरबूक QICC, और दूसरी तरफ देख रहे हैं यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट. ये दोनों टीम आमने सामने. यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट के जो गेंदबाज है वो सामने वाले बल्लेबाज को यम्मी यम्मी आउट कर रहे हैं. ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट आए, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं. मैं कहूँगा बल्लेबाज थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और ये हमेशा कहा जाता है.
अब यहाँ पे या सबर रखा जाएगा या फिर बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना होगा, क्योंकि जिस गेंदबाज ने 6 रन दिए थे उसके ऊपर ही आपने आक्रमण किया और विकेट दे दिए। 2 विकेट इस ओवर में, खतरे की घंटी जरूर बजी है यहाँ पे। गेंदबाज फिर से अलग एक्शन से गेंदबाजी करते हैं ये। ओहो हो, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, ये ओवर हैट्रिक है। इस ओवर हैट्रिक है ये। रूप भाई ध्यान रखना पड़ेगा हमें भी, मालूम है, क्योंकि ये हम नॉर्मल हैट्रिक नहीं है, ये ओवर हैट्रिक है, क्योंकि ये तीसरा विकेट इस ओवर में, ये महत्वपूर्ण होता है। और देखिए क्या गेंदबाजी, गेंदबाजी की धार जिसे कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं जब गेंदबाज खूंखार हो जाता है तो वो ऐसे ही शिकार करता है, और इस प्रकार से इन्होंने शिकार किया। पहले ओवर में कोई विकेट नहीं था, लेकिन इस ओवर में आए 3 विकेट इन्होंने चटकाए। और इस ओवर की अगर कहानी देखें तो इस ओवर में रन नहीं आ रहे, सिर्फ 1 रन आया है, 3 विकेट आए हैं। और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 विकेट खोए हैं, ये अब मुझे लगता है थोड़ा सा मरबूत सीसी को थोड़ा सा पीछे ढकेला है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। 4 ओवर में 34 रन कोई गलत नहीं था, आपको 12 में 24 बना लेते हैं, आपने बेस अच्छा तैयार कर लिया था। सिर्फ वहां से एक बल्लेबाज को वहां से वो जिम्मेदारी वाला खेल करना था, लेकिन सब आ रहे और सब शिकार बन रहे। 3 विकेट अब तक इस ओवर में। शफीक 3 विकेट अब तक हासिल किए, 7 रन खर्च किए अब तक। किफायती गेंदबाजी। ओहो, व्हाट अ बॉलिंग, ये क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हम हमेशा कहते हैं ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी ये क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र है। इसको आप सिर्फ चॉप कर सकते हो, या फिर उसे डिफेंस कर सकते हो, या फिर धोनी स्टाइल में उसे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेल सकते हो, यही सारे ऑप्शंस है। लेकिन इस गेंद पे भी 2 रन मिले, क्योंकि फील्डिंग काफी दूर दूर तक फैलाई गई थी। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 37-37, आखिरी गेंद इस ओवर की यानी बाकी। और इसका मतलब है आने वाली अगर 7 गेंदों की बात करें तो 7 गेंदों में रन चाहिए 21। 7 बॉल्स रिमेनिंग। टाइम की ओर ध्यान रखना होगा टीम यमी टेस्टी रेस्टोरेंट, क्योंकि 6 मिनट की बाकी है और अभी भी एक और आना बाकी है, ध्यान रखें। शफीक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन इनका जो जोन है हमने देखा वो गलत था। अगर यही स्ट्रोक वो कवर तक खेलते तो अच्छा स्ट्रोक होता। इन्होंने ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ये सबसे सफल ओवर इस इनिंग का खत्म होता हुआ। इस स्पेल की बात की जाए तो 2 ओवर के स्पेल में हम बात करें गेंदबाज शफीक की, तो 9 रन देके 3 विकेट, 4.50 ये इन्होंने औसत दिया है। अब आने वाली 6 गेंदे, रन चाहिए 21। अब हम जब कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री में हम हमेशा कहते हैं कि ये तोड़फोड़ वाला ओवर है, ये आखिरी ओवर तोड़फोड़ वाला है, और 6 गेंदों में 21 चाहिए। शिलदार भाई मेरे हिसाब से 12 में 24 थे, अगर 10 भी बनाते तो 14 रन मेरे हिसाब से तो करना आसान होता, लेकिन अब 6 में 21 है, थोड़ा सा प्रेशर होगा, हो सकता है, ये ऐसा नहीं इम्पॉसिबल शब्द में ये पॉसिबल छुपा है। तो मेरे हिसाब से 6 में 21 ये अच्छा बैटल होगा शिलदार भाई। यस जुराग भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। This is turnaround. You can't expect this kind of turnaround in a shorter format. Fairuz was not middling. The ball is not quietly coming to his bat. And that's a dismissal way, so I've got to give credit to Shafiq for taking the 3 wickets in an over. Has absolutely turned the complete momentum, has been shifted to the bowling team. Now, the batting team has 21 runs to win. All right in the blocker. You got to miss and I hit it. Rattle the middle stump and look at that red color flies away. This is what happens when you're having this kind of huge pressure and finally comes to a final over. The batters had set the tone but just not enough. Still you require 21 runs. It's going to be a big mountain to climb for the batting team. It's not just happening for them now. The batters in the middle order have completely failed to perform. Ismat has done 2 brilliant shots in his spell, but just not enough. He'll have a very tough job ahead of the
batter who was just walking into the middle. They're talking about 21 runs in the last 6 overs. An impact player is there, Arif, and substitute Nikas is out. Can he make an impact in this game? This is going to be tough. This is going to be very tough. He has absolutely no time to settle down there. He needs to go from the very first ball. Swing and a miss. And that's a game for them. It looks like that's a game for the bowling team. Yummy Taste Restaurant is tasting those sweet deliveries. The first two deliveries, Chirag, it was very yummy. As the name rightly says that, I'm the one who's from the Yummy Taste Restaurant. These two deliveries. The semi connects. Tough one, very tough and very well done. They don't mind this double. They really don't mind these 2 runs. The fielders are under pressure. The batting team has much more pressure. Somebody is just sitting and relaxing with one apple. None other than Mr. Jaisal. The red apple. Swing and a miss. That's a game. 39 and 19 from 2. Even if they go for a big 6, it's not going to help them. Got to give credit to this man. Wise 4 deliveries, 2 runs and a wicket. Here we go. Edge, and they will cut it off. Third man just for a single. As expected, the scores are going ahead of the past score in this ground, which is 60, which is always very, very tough to chase. And the middle order, he got to give. Shafiq has done the job for his team. We have to pick one man of the match. It has to be for the man who has taken 3 wickets. So for all of a sudden, not enough timing. They got a height but not the distance, and they have to move. 2 runs only considered. That's how you defend. That's how you play a better cricket. That's how you become the winners, and that's how you celebrate, and that's how you become the man of the match. Not enough in the first over, and coming back and taking 3 wickets in the second over. That's also all big wickets. Man in yellow, we are going to call your man of the match of the last one. No surprise. That tremendous bowling performance. We just confirm with Mr. Rauf. It's none other than Shafiq. 2 overs, 9 runs and 3 wickets. Take a bow. Shafiq, you can come and collect your man of the match award little later. Thank you, buddy, for entertaining us. And you got to feel sad for the team. It's never into the chase. And Emmy Taste Restaurant. Now we have the last match coming up, 11:23 p.m. Over to our Hindi commentator, my friend, Mr. Chirag. यस, थैंक यू सिलदार भाई. आखिरी मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सारे स्पॉन्सर्स थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छा सपोर्ट हमें दिया है और उसी कारण हम इस बड़े इवेंट को कर पा रहे हैं. धन्यवाद.
मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो वहां पे दिया जा रहा है हमारे टेक्नो मीडिया के विकी भाई शफीक को मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारे आप दृश्य देख सकते हैं, जहां पे आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से मैन ऑफ द मैच शफीक 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। और ये जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड है वो भी वहाँ पे नवाजा जाएगा। एक ज़रूर हम हमेशा बात करते हैं कि आपको जब मैन ऑफ द मैच मिलता है तो सिर्फ एक ट्रॉफी मिलती है, लेकिन जब आप प्रीमियर टेक्नो मीडिया के टूर्नामेंट में आओगे ना, तो आपको जब एक मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो आप इतने सारे प्राइजेस लेके जाओगे कि घर वाले पूछेंगे भाई कहाँ गया था तू। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ शिजिमोन भाई पूरी तरह से पूरे बिजी हो जाते हैं, इतने सारे हाथ में उनके प्राइजेस रहते हैं, वो ग्लास, वो बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आप देख सकते हो, तो वो गिफ्ट हैम्पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। विकी भाई आइए आप। शफीक मैन ऑफ द मैच आप हो। वेल बॉल 2 ओवर 9 रन 3 विकेट और मुकाबले को पूरी तरह से बदल दिया था उन्होंने। मज़ा आता है ऐसा देख के। तो मैदान की ओर बढ़ने वाला है क्योंकि मुकाबला भी अब मैदान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष पहले राउंड का मुझे लगता है ये आखिरी मुकाबला। टारगेट किलर्स एंड मित्सुबिशी मोटर्स टैलेंट्स, बाप रे ये बहुत बड़ा नाम है। ये कमेंट्री करते हुए मुझे लगता है MMS ऐसा ही बोलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन टारगेट किलर्स अब ये बल्लेबाजी से किल करेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके सामने MMS ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। TKL वर्सेस MMS, मजा आने वाला है मुकाबला। मित्सुबिशी मोटर्स टैलेंट्स और दूसरी जगह पे टारगेट किलर्स के बीच ये मुकाबला। हमारे विजेश भाई भी थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं क्योंकि पहले दिन नहीं थे। राहुल को तो काम ही नहीं है, पहले तो डीजे तो बजाते थे। पहली गेंद पे रिवर्स और ये 6 रन, पहली गेंद पे सिक्सर। इनका नाम है किलर और ये खेलते हैं जैसे मिलर। क्या स्ट्रोक खेला गया। रियाज आते ही पहली गेंद पे सिक्सर।
मोहसिन के ऊपर आक्रमण, मोहसिन ने कमबैक किया, कहा आपने पहले गेंद पे सिक्सर मारा है, दूसरी गेंद में डॉट करूंगा, डॉट बॉल। अब ये स्ट्राइकर अंपायर कौन आ गए? स्ट्राइकर अंपायर कुछ अलग दिख रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्राइकर अंपायर है हमारे रमजी भाई, और मेन अंपायर तो मंसूर भाई। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को ढकेला, फील्डर है थर्ड मैन पे, कोई गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता है रमजी भाई कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, उनको कोई भी काम दे दो, वो एक कमेटी में है, वो काफी अच्छा काम कर लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर वो है, कमेटी में रहेंगे तो भी अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी का काम करेंगे तो भी अच्छा काम करते हैं। इनको जो भी काम दो वो काम में कभी भी वो कम नहीं करते, हमेशा ही अपना काम बखूबी निभाते। ऑन स्क्रीन थे, उसके बाद भी बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन मैच की ओर भी देखना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, और यहाँ पे एक एक रन से आगे बढ़ता हुआ। अब मुझे कोई है जो उन्होंने कुछ अलग बताया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला ओवर चल रहा है और 8 रन बने, अब उनकी एज के बारे में भी चर्चा हो रही है। उम्र है 55 की और दिल है बचपन का, ऐसा रमजी भाई के लिए टैगलाइन दिया सीजी भाई ने, के सही है। ये लोअर फुल टॉस थी, इस बार गेंद गली के क्षेत्र में जाएगी, थर्ड मैन की खिलाड़ी तो गली में जाए, फंबल, दूसरे का कॉल और 2 रन पूरे। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 10 रन। पिछला मुकाबला 54 का हुआ है, और इस मुकाबले में अब तक पहले ओवर की बात की जाए 5 गेंदों में 10 रन आए। रियाज 9 पे खेल रहे, दूसरी ओर इफलान 1 पे खेल रहे। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, वहां पे फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट, तो डायरेक्ट हिट अगर होती तो विकेट जरूर आता, लेकिन अच्छा बैकअप, वहां पे 1 ही रन मिलेगा। ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टारगेट किलर्स जा पहुंचे 11 रन, और कोई यहाँ पे जिस प्रकार से विकेट नहीं, अच्छी शुरुआत। और ये देखिए इनके बारे में चर्चा हमेशा होती है, ये कहीं पे भी जाए ये हमेशा दिखते हैं, ये कौन से भी कोने में खड़े हो जाए इनको ढूंढना आसान हो जाता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन रियाज भाई को पकड़ना मुश्किल नहीं है। ये हमेशा ही स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए चश्मा संवार रहे, देख रहे, स्माइल कर रहे हैं, इनकी खासियत है। पिछले साल इनकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन इस साल देखिए दाढ़ी भी बढ़ा दी है, बहुत अच्छा लुक। और ये देखिए और एक नाम, ये जयसल भाई है, ये भी, इनको भी दिखाना हमारा कर्तव्य है। ये छुप गए, ये पर्दे के पीछे वाले हीरो है, ये कभी आगे नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो फिर ये कहर करते हैं। यस, थैंक यू जयसल भाई, वी लव यू। जाएंगे बीच मैदान पे, स्कोर कार्ड की बात की जाए, ये देखिए ये राहुल, ये डीजे राहुल है, डीजे वाले बाबू आज बॉल बांटना। एक ओवर 11 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन, नासिर, नासिर, नजीर, नसीर, यस। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ये मेरिट पे खेलना इसे कहते हैं, और ये मेरिट पे खेलते हुए बल्लेबाज 1 रन मिलेगा। रियाज और इफलन, ये दोनों बल्लेबाज, अगर हम टारगेट किलर्स की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स श्रीलंकन हैं, श्रीलंका से आते हैं।
इस बार पैरों पे गेंद की है लेकिन रन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू विकेट नहीं है, इसी कारण बल्लेबाज बहुत बार बचते हैं। और ये आप सारे नज़ारे देख रहे हैं, ये MS धोनी क्रिकेट एकेडमी का ग्राउंड और ये ग्रीन लश ग्राउंड सभी के नज़रें ज़रूर अपने ओर खींच रहा है। लेकिन इसी मैदान पे इस बार ये गेंद देखना है, इसी ग्राउंड पे आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया ओपन सारे टेनिस क्रिकेट के बड़े सितारे आपको इसी ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे 9 से 13 को। तो उसके लिए भी बहुत तैयारियां हो चुकी है, वो टूर्नामेंट भी तो मुझे लगता है 9 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट होगा, 9 से 13 वो चलने वाला टूर्नामेंट, वो भी बड़ा टूर्नामेंट है। 14 रन अब तक, और ये ओवर नंबर दूसरा नसीर और उनके सामने बल्लेबाज इफलन। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे लेकिन नजरें हटा दी थी, शरीर पे जरूर गेंद लगी है। अंपायर कहते हुए लेग पाइज मंसूर भाई, थैंक यू। स्कोर चापो जा 15 टारगेट किलर्स। शुरुआत देखिए, पहले गेंद पे छक्का आया था, उसके बावजूद भी वापसी अच्छी की है। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, फाइन लेग पे खिलाड़ी है, वो गेंद को लाएंगे, तब तक एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 16 अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल आना बाकी। ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 11 थे, इस ओवर में अब तक 5। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा समझ नहीं हो। बहुत अच्छा प्रयास, प्रयास के लिए 10 में से 10 अंक। व्हाट एफर्ट, एफर्ट होने चाहिए। 2 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। आप देख रहे हो प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग, हमारे टाइटल स्पॉन्सर जस्ट अस एंड ऑटो, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिनके बारे में हम हमेशा देखते हैं। और इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हो जो सरप्राइजेस पहले दिन खुला, किसी को भी पता नहीं था कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स यहाँ पे रखी गई है। जिस प्रकार से एसीएल कमेटी ने वो एक सरप्राइज दिया, वो काफी बड़ा सरप्राइज था सभी के लिए। गेंदबाजी के लिए प्रणव, लिटिल मास्टर ऑफ कतर टेनिस क्रिकेट। क्या गेंद डाली है, पूरी तरह से बीट होते हुए। और ये रिव्यू किया है, ये रिव्यू फॉर वाइट, और यहाँ पे चेक किया जाएगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी,
क्योंकि बल्लेबाज जहाँ पे खेल रहा है उसके बाद वहाँ हम हमेशा कहते हैं जब बल्लेबाज अपनी जगह बदलेगा तो फिर वहां से वाइड लाइन बढ़ती है, ये भी हमेशा याद रखे। स्कोर 17, पहली गेंद पे सिक्सर, और उसके बाद इस बार गेंद बल्ले पे आई है, फील्डर वहां पे है, गलती की, कैच छोड़ा। कैचेस विन मैचेस हमेशा कहा जाता है। स्कोर मूव्स ऑन 18, 18। ये देखिए रिप्ले में, ये कैच होना चाहिए था। इतना मुझे नहीं लगता कि परेशानी थी, क्योंकि आसान सा कैच था, लेकिन हाथ बंद नहीं कर पाए। दुनिया मुट्ठी में करनी चाहिए थी, ये मुट्ठी में बंद नहीं कर पाए गेंद। स्कोर मूव्स ऑन 18, नो लॉस। पहली गेंद पे छक्का लगा था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने की जो वापसी, तारीफ है काबिल। प्रणव, द लिटिल मास्टर ऑफ दोहा कतर। ये देखिए, ये इनके पास गति नहीं है, लेकिन टिप्पा ये बहुत मायने रखेगा। और ये विकेट, गलती की और विकेट। और ये रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चुका है। रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म होता हुआ, रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ, और फिर से मैदान की ओर आएंगे। यस, अब मैदान की ओर बढ़ेंगे। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 18 लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर तीसरा। यस, मैदान की ओर गेंदबाज अगली गेंद लेकर, ओवर नंबर तीसरा, 18 लॉस ऑफ 1। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी है थोड़ा सा वाइड है, उनके पास से गेंद जाएगी, फील्ड करेंगे, 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 19, 19। रियाज और अभी अभी उनके साथ ज्वाइन हुए फैयाज। फैयाज अब स्ट्राइक पे आएंगे, 19 पे 1। ये तीसरा ओवर है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, गेंद को आने दिया, बहुत टाइम था बल्लेबाज के पास, उन्होंने गेंद को खेला, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 20, 20, 20 ऑन बोर्ड। पहली गेंद पे छक्का लगा था शेजर भाई, उसके बावजूद टोटल नहीं बन रहे।
लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे, गलती नहीं करेंगे, विकेट। 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। और अब देखना है, अब ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तो पहले हमने ले लिया था, तो अब यहाँ पे कोई टाइम आउट नहीं रहेगा। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। लेकिन शेलजार भाई हमारे साथ जुड़े हैं। शेलजार भाई, जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में 11 रन थे, पिछले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन आए और 2 विकेट गए। ये थोड़ा सा टर्न पॉइंट है यहाँ से सर। As it all happens here after getting a good start, as you rightly mentioned, Chirag, first 6 from the first ball, and you got to give credit to the bowlers. I think considering the last 3 games, we have seen low scoring. It's 35, 47, and after that, the 50 plus was defended very smartly. And now we're looking at another low scoring game. Another soft dismissal. The time is at 11:47, as few minutes away for the midnight, and we all are working tomorrow. The guys have to get back and start working. Another week starts here in Qatar. It's all happening here in Absolute Sports Ground. We are on the day number 3 of Asian Cricket League, one of the best in terms of the number of teams participating, 24. And pre-quarter May you will have 16 teams. Based on the performance and the 4 teams based on the run rate will get through towards the quarter final. We'll have the 8, 4 and during the Crown's closing ceremony grand finale. 2 teams out of 24. More than 900 players have registered. The biggest tournament in the country is moving on. Target killers 24-2. Oh, rattled the thumb right after this one. He was going across the line. That's not a great idea. You're bowling wicket to wicket, and have a look at this. Paid through the gate and paid the penalty. 20 runs, 3.1 overs, target killers. What they're doing, another low scoring game. As had been bowler's paradise. He got one of the best player in the fielding side, Pranav, leading this team. Mitsubishi Motors Stallions have done the job in the bowling department. Sajid is still there, and Mudassir, the very first ball, getting a breakthrough. Another batter trying to play across the line and completely beaten. I need a partnership. I need to do a little bit of damage work has to be done in the middle order. As an impact player in. As umpire declares the impact player in. As umpire, let's give us a moment just to clarify that. It's all about the momentum shifting towards the bowling. Second ball. Jazwat and Sajid. Easy one, easy one. Come on, take this. Yes, got 2 from 2. This is what happened. Pace off and wanted to play again, making the mistake, playing across the line, and ended up in a safe pair of hand and shot silly mid wicket, and that's been a very lazy shot. It's not enough timing, not enough power, as giving up another wicket. Wicket number 2 in this over for Mudassir. Take a ball. Still waiting for the first hat-trick in this tournament. Got some very good performance. Shafiq in the last game came back strongly and taken 3 wickets in an over. That's exactly the way they become the victorious team, the man of the match in the last game. So this has been bowler's paradise. The bowling track
Still waiting for one batter to perform with those shots. 24-4 after 3.2 target killers. They're not able to kill anyone so far. He was on a hat-trick and very well pushed towards the long off. There's no bit off there. The fielders are pretty much in the boundary region. You always have a chance to score more runs if you try to push towards the long off in this ground. Oh, bit of turn. Very good line and length. Have a look at the turn. That's a in swinger. That's exactly the off spin comes to the play. The bowler looks like a leg spinner, but is an off spinner. Is it going to be a googly now? This is what happens. A fuller length and try to sweep it towards the square leg. Just not able to get it. What a good over. They just conceded 1 run. 2 wickets take a ball. What a good performance with the ball. Mudassir, the champion bowler. 21 for 4 after 4 overs. They're struggling to get runs. Target killers need somebody to come and play a real cameo towards the end. 2 overs to go. They need at least 20 runs. Still they will run short of 20. It's a 60 runs is the pass score in this ground. And anything more than that is defended. That's what he's talking about. Yes, Chirag, as you rightly mentioned, 11 runs coming from the first over. And after that, 10 runs from the remaining 3 overs. That was a real disaster here. Ahmad Rifaz can do something different. And Nazir, after bowling a superb, just 2 runs conceded. He is into second over. Very experienced bowler. Nazir, a senior campaigner. This time he connects. He connects really well. It's a 6. That's massive. Got a bit of full toss and bit complete use of it right in the middle of the bat and punished towards the mid wicket. That's a massive hit. Finally. Brock dies now 7 from 2. Try to pull this time and completely it's good comeback by the bowler Nazir using his experience. The last one was full toss, 27 for 4 as a penultimate over. They need to run as much runs as possible from the remaining deliveries in this over, and after that there will be 1 more. This time much better length, very good length. After conceding a 6, and it's a good back. Couple of last deliveries. That's right on the money. 6 to start and 2 dots. 3 legal deliveries left in this over. 27 for 4. Up in there, catches the call, and Jasim making no mistake. That's a well-judged catch under the lights. Always difficult. He was running towards few yards onto his left side. It's completing a very good catch. Jasim, well done. 27 for 5. Half of the man back in the depth. In spite of getting a good start, the very first ball was punished towards 6, and after that, it's been a disaster. The bowlers have come and done the job for his team. Another soft dismissal, not enough power. He went through the line, wanted to clear the long on. And Jasim was a safe pair of hand there. Nazir using his experience. It's a bit of variations, and he knew he's going to go after him. He's completing a good catch. This is all around good cricket. It's all about defending the low score games here. The last game of day number 3. We'll be back tomorrow 6:30 p.m. You need to start early tomorrow's matches. Please note all captains. Just pushes towards this third man region. Let's go stop there inside the circle. Just conceding a single.
That's a good comeback. An experienced campaigner. It's after being punished for a 6 from the very first ball. Now, have a look at this. It was none, a wicket, and just 1 run. Swing and a miss, and that's how you complete this over. After a tricky start at 6 and just conceded 7 runs and 1 over to go. 28. 35 was the lowest score in this tournament. Being the third day, 35, we'll just recheck the calendar app. 35 is the lowest score in this tournament. 33 is the lowest score. The second lowest score is 35. Looks like 28. Gettable another 10 runs. Pranav is having a word with this bowler. He's going to bring on another very good bowler to bowl the last over. He's got the momentum completely into his favor. And he is going to walk to bat as an opening batter for sure. Jasim is another very good all-rounder. He's not going to bowl. Got plenty of players in their lineup. Mitsubishi Moto Stallions are up against target killers. Now this over, they need to really kill the bowlers. Can they do it? Oh, that's Satish. Satish like a Malinga. Very interesting to see his bowling action. Started off with a wide, moved to 29. Oh, that's good. Very nice. Good action. Very interesting action. How he's taken off. And Satish Malinga. Even after 20 years, that one man, he still remember his action. He's none other than one of the best bowlers Sri Lankan cricket produced. Big shot! And that's a reward. That's a maximum. What a good shot. Use the pace of the bowler. And says thank you. Drifting towards his legs and punished towards the square leg. Boundary. Nets flying away from the ground. They move to 36. So 33 was the lowest score. Now they are much more than that. Sajid, 6 from 5. Got a big 6 and they continue. 4 legal deliveries left in this over. Oh, this time, again, there is a man. Deep square leg will cut it off and they can easily come back for the second run. Has he gone? Has he reached on time? Square leg umpire says got to go for the third umpire. That's going to be a very interesting decision. Has he reached on time? We got the time now. As a big decision is coming from the third umpire. It is not out. That was very, very close. It was in the air, the bat right on time, and the advantage goes to the batter. It's all happening there in the final over. They move to 38. 3 legal deliveries left in the final over.
This time, oh, he fumbled there himself. He get only a single. And throws to the keeper's end. He needs to take off. He easily run out. The idea was to bring the non-strikers in. He's the man who can just clear a couple of boundaries and reach to a decent score when they finish this innings. It's midnight already. Good morning to everyone in Qatar. The score at this moment is 39 for 6, 5.4 overs. Target killers got Mufaz. 2 deliveries were taken to. That's a fuller length. Need to run hard. Need to run really quick to get this. They can now easily come back for the second run. Bit of work from the keeper. And the square umpire has to say it's not out. He's reached on time. .41 for 6 and 1 ball to go. Sajid 11 from each. Has banged on the stump. Satish. Yes, it's given not out. Can continue. Another chance. It survives for the second time. The run out decision from the third umpire. And square leg umpire, Mr. Ramsey, had to make a big decision. It's given for the third umpire. It's not out. The last ball, 41. Get one big shot and get somewhere close to the 50 runs. That's a dismissal in the last ball as well, so they're not able to run more than 41 in the allotted 6 overs. They'll come back to the chase very, very soon. Guys, make it fast. They'll have 42 runs to win for Mitsubishi Motors Stallions to win this match. As we know, from 24 we go to 16, we go to 8, go to 4 for the semi-final, and 2 teams will come to face each other to become the champions during the closing ceremony. As big thanks goes to the organizer, Premier Techno Media, setting up the real high standard in terms of conducting this cricket tournament. The biggest in town in terms of the number of teams, 24 for the very first time in the tournament. Talking about the numbers here, it's 42 to win for Mitsubishi Motors Stallions to win. It looks easy. 35 was chased down. The second match they defended 47. The third one was a very close match. Now move to the last game, the last innings. We'll be back tomorrow by 6:30 p.m. for the day number 4. The team managers, please note, we need to start the game by 6:30. Thanks to all the sponsors. Just Us and Auto, the title sponsor of this event, supported by our other sponsors as well. Red Apple, thanks Mr. Jazim. Icon Training Center, Creative Edge, Absolute Sports, Mabu, Contracting and Company, Printech Solution Digital for our printing partner, Tandoora King Restaurant, Abad Sports, Wada Trading, EcoFresh, A Plus Symphony,
Gift Shop, Food Art, TY Sports, Al Nool Trading, and the ball has been brought to you by Sixer, Gulf Plant, and all the franchises, 24 franchises in this tournament. Thank you so much, guys. The spectators who comes in good numbers, being a Saturday. Let's move on, guys. Just 42 to win, 6 overs, and you got half an hour. If you can complete the formalities before 12:30, the timer starts in a while from now. Can we have the opening batters to do the job for the team? Mitsubishi Motors Stallion need 42 to win from the allotted 6 overs. It's going to be very interesting how they're going to start with the power play. Pranav is going to walk. You'll have to wait and see who's going to be his opening partner. Is it going to be another top order batter? The skipper himself. It's a low scoring game, just 42 to win. It's quite capable of producing a match winning innings. We'll just wait for a minute. Who is going to walk in as the 2 opening batters for Mitsubishi Motors Stallions? Thanks to this venue partner, Absolute Sports, MS Dhoni Cricket Academy. Men in black need to defend this. It's not going to be easy. It's a tough job ahead of them to defend a score of 42 from 6 overs. We'll have to wait and see. 2 umpires walks into the middle. Mr. Ramsey had a tough time in the field, being a square leg umpire. 2/3 umpire decision. And Mr. Manzoor, as expected, the man to walk in, the skipper of Mitsubishi Motors, Stalin Pranav, jersey number 18, alongside with him, jersey number 333, Khalid. 2 opening batters. Yes, let's move on, guys. 42 to win, 6 overs. Pranav and Khalid, 2 opening batters. And target killers have to defend this. It's too good being a skipper and the opening batter. He needs to go right after the very first ball. Yes, Amba, let's go. Rikas to start the bowling from Pavilion and right arm over the wicket to the skipper of Mitsubishi Motors Stallion, Pranav.
Straight away. Thank you so much. Swept in style and cleared the mid wicket. What a good shot. Very first ball similar. चिराग जी पहला जो इनिंग्स पे एक बॉल छक्का मारा था and it's a similar one. पहले बॉल में 6 and एक over. That's what happens when you have a ball drifting towards his pads, and he is a big player, big match player. Little master, he is known as Pranav of Qatar. Let's go, 6 from 1. Ah, beautiful, lovely touch. It's driven towards the mid wicket. Yeah, it's good cricket. It's after being hit for the very first ball 6 and is rotating the strike. He's given the strike to his partner Khalid. That's how you start an innings, with a big 6. Swing and a miss. It's pretty much outside the off stump. Good line and length. It's not a huge score there. It's chasing. It's 42. Left it over. The idea was to bowl to his offside. Also a big player, Khalid, strong on his leg side and offside. Recast again. That's driven nicely. He'll find the field and deep extra cover. To reach for the delivery. It's a good looking shot. 11 runs coming in the last innings with that big 6. Now Pranav started off with a huge one towards the mid wicket. This time we're not getting good connection, but still will be able to score just a single. Should have been another run, but they got the runs in this over. They're chasing 42 in 6 overs. They need to get at least close to 10. Another one goes outside the off stump. This time it's a fair delivery. And that's a completion of the power play. Number 1, Mitsubishi Motors Stallions, exactly 10 runs for no wickets. Khalid on 1 from 3, and Pranav, skipper, 8 from 3. Yes, let's move on. 10 runs coming from the first over. 42 is the target. 32 to win from 30. It looks very simple. And to target killers brings another bowler. It's Mafaz looking for wickets. The only way they can come back to this game, they get rid of these opening batters. They got solid batting lineup. Mitsubishi Motors Stallion teams. Checking the ball. Yes, good to go. Mafaz to Pranav. It's going to be interesting now. He got the first ball. He punished towards the mid wicket for a huge 6. He'll be in a hurry to finish things off. Got to be careful. Very strong on his onside. Pranav, one of the favorite regions in this ground, the deep square leg and mid wicket. Too early. It's a flighted delivery. He played across the line. That ball was pretty much outside the off stump. Now this is exactly, you come back to this game. Now you need to get those dot balls. Little pressure will be added to the batting team. Pranav is the kind of player who loves to see ball is coming to the bat.
catches the ball. One bounce and spinning away from the field of the short fine leg. Not a convincing one. And have a look at this fielding position. Thereafter the power play, he got deep extra cover. It's long on and long off, very much in the boundary lining. And the mid wicket has been pushed to mid on. And a deep square leg goes there, and there is no fine leg. Interesting fielding position. Trying to sweep again, he finds the third man in the circle. Look at two fielders there. There's no backward point, the deep point, there is a fielder. Not enough power again, not getting the middle of the bat, just managed to get a single. 12 plus 1, 13 for no loss after 1.4 overs. Out to Mufas to Khalid. This time he connects. And through the gap, two fielders there, mid wicket and square leg. Has no chance to stop. It's a boundary, much needed one. And Khalid flourishes with that. Got 1-6. The very first ball now. They're moving on quite nicely here. Just 25 runs from 25. Exactly. A run a ball will take them through. 25 from 25. Has some pace off, finds a fielder in deep square leg. That's a completion of this over. Retain the strike after the completion of the first two. Mitsubishi Motors Stallions move to 18 for no loss. Pranav 10 and Khalid 7. And over to our Hindi commentator, Mr. Chirag, to complete the rest of the overs. Chirag ji, ab 24 chahiye, 24 deliveries mein. It's up to you how you handle this. यस थैंक यू सिलदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से, और थैंक यू वेरी मच। अब इस हम बात करें मित्सुबिशी मोटर्स स्टेलेंस की यानी एमएमएस की, तो इनके लिए कोई अब तो मेरे हिसाब से इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 18 रन, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंदें और 24 की जरूरत है। चौबीस गेंदे 24 रन। गेंदबाज तैयार, ये खराब शॉट सिलेक्शन है, गेंद हवा में और आउट। ये इक्वेशन बदलता हुआ, हम हमेशा कहते हैं पलक झपकती ही परिस्थितियां बदल जाती है। फुल टॉस गेंद थी, अगर इस गेंद पे थोड़ा सा फोर्स करते तो गेंद आउट ऑफ द पार्क भी चली जाती, लेकिन मन बना लिया था कि सिंगल के लिए जाऊंगा, और इसी कारण ये आउट। जिस प्रकार से ये कैच लिया गया, आसान सा कैच, और विकेट नंबर पहला 18 पे लगता हुआ ये पहला झटका मित्सुबिशी मोटर्स स्टेलेंस को। जासिम द न्यू मैन इन, क्या यहां से ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा सकते थे मेरे हिसाब से, हाँ, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन। थोड़ा सा अगर इसमें फोर्स लगाते तो गेंद काफी बाहर चली जाती, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि गेंद जिस प्रकार से ऊपर लगी है, बल्ले के ऊपर लगी ऊपरी हिस्से पे, और गेंद हवा में चली गई और विकेट। जासिम न्यू मैन इन। गेंदबाजी की बात करें तो रिफाज व्हाट अ बॉलिंग, सीधा जड़ में, पहला रन तेजी के साथ भागे, 1 रन पे संतुष्ट। स्कोर मूव्स ऑन 19।
19 ऑन बोर्ड। अभी भी आने वाली 22 गेंदे और रन चाहिए 23। ये खराब शॉट सिलेक्शन है। गेंद पहले थोड़ा सा पीछे रखा, घसीटा गेंद को पीछे गेंदबाज ने। और प्रणव जो एक अच्छे बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जैसे हमारे रॉब भाई ने मुझे कहा कि लिटिल मास्टर ऑफ दोहा कतार क्रिकेट, और काफी अच्छा क्रिकेट इनके पास है। हालांकि इनका कद छोटा है लेकिन स्ट्रोक वैसे ही खेलते हैं। इस बार ये छोटा पैक बड़ा धमाका वाला सिक्सर है। 6 रन सिक्सर। स्कोर मूव ऑन 25। खुद कैप्टन है और कैप्टन को मालूम है कि किस प्रकार से लेके जाना है, और आइकॉन भी वही है। सब कुछ है, जब सब कुछ आप हो तो फिर आपको ये सब कुछ करना ही होगा। 25 स्कोर कार्ड पे। अभी भी 17 की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, और आने वाली गेंदें बाकी है 20। ओहो क्या स्ट्रोक है ये, कमाल का। 4 रन चौका, एसीएल चौका लगता हुआ, और गेंद आउट ऑफ द पार्क। जैसल भाई थोड़ी देर के लिए देख रहे थे कि भाई बॉल रुकेगी, नहीं बॉल नहीं रुकी। 4 रन, वो सीधा वो ट्रम्प के प्लेटफॉर्म पे चली गई है। स्कोर मूव ऑन 29। 13 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 13 रन रिक्वायर्ड इन 19 बॉल्स। और प्रणव जिस प्रकार से ऑलराउंडर खेल रहे, क्योंकि वो कैप्टन है, आइकॉन है, सब कुछ है। अभी भी 13 की जरूरत। इस बार ये गेंद नहीं रुकने वाली। 6 रन सिक्सर। व्हाट अ बैटिंग प्रणव, ये छक्का नहीं अट्ठा, क्या बल्लेबाजी की है, तारीफ है काबिल। सेवन रन रिक्वायर्ड। 18 गेंदे और 7 रन। अब ये 7 किसका देगी किस्मत। मुझे लगता है जिस प्रकार से 7 रन चाहिए। प्लेयर प्लीज बीच में ना आए प्लीज। 7 रन रिक्वायर्ड। थैंक यू बीच भाई। Seven runs required in 18 balls. प्रणव की बात करें, 10 गेंदे 26 रन, एकमात्र बल्लेबाज मुझे लगता है पिछले मैं 2 दिन से 3 दिन से मुकाबले देख रहा हूं, लेकिन ये रात के समय ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम बार देखने को मिली है। वेल प्लेड, मजा आ गया देख के। ये धीमा गेंद था, उंगलियां फेरी गई। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली गेंद डॉट। मफास बड़े स्ट्रोक की तलाश। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल। पिछला ओवर काफी महंगा गया। अगर वो उस ओवर में डिफेंस के कम रन आते तो थोड़ा सा इक्वेशन बदलता, क्योंकि उस ओवर में ज्यादा रन चले गए। एक छक्का एक चौका, 2 सिक्सर एक चौका। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, डॉट बॉल। और जासिम अभी भी झगड़ रहे। फिर से गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। थोड़ा सा अगर गेंद अच्छे से हाथ में आती तो विकेट आता। अब चाहिए रन सिर्फ 6। 6 रन रिक्वायर्ड। क्या ये धोनी स्टाइल में मैच खत्म कर सकते हैं? ये बहुत बार करते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी है, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। गुजरात धमाका में जिस प्रकार से प्रणव ने बैटिंग की थी, ये वही खिलाड़ी है प्रणव। बड़ा नाम है और बड़े खिलाड़ी की बड़ी ये पहचान है।
ये यही कह रहा था कि ये धोनी स्टाइल में मैच खत्म कर सकते हैं, और इन्होंने धोनी स्टाइल में मैच को खत्म किया। सिक्सर, वेल प्लेड। थैंक प्रणव बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, नो डाउट, और आज भी अपना कमाल दिखाते हुए। और आज का दिन यहीं पे हम समाप्त हुआ, ये हम ऐलान करते हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड होगा और उसके बाद आज के दिन खत्म होगा, ये हम जरूर ऐलान करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।